work, accomplishment thereby deserve to be acknowledged and honored. WIRC is organizing a special drive in this Women's Week and have done various seminars from 1st March to 6th March. Today, on 7th March 2022, we have mock drill GD and PI by our speaker, CA Sayali Chandaliya. Welcome, ma'am. And to formally introduce her, I request CA Preeti Agarwal, ma'am. Thank you, Charmi. I also thanks WIRC for giving me this opportunity. Sayali Kothari carries with her decade plus of rich global corporate experience, including conventional CA practice. She is a holder of distinguished professional degrees, to name the few: Chartered Accountants from ICAI of India, Chartered Accountants from the Institute of Chartered Accountants in England and Wales, UK, Business and Finance Professional from ICAEW, UK. Among her recent corporate positions, she was UK Operations Reporting Manager at Smith & Nephew, UK. She was a manager having different profiles in leading international investment banks, Credit Suisse Group, Switzerland, and Dutch Bank Group, Germany. She is a founder director of AB Kothari and Company, a global advisory firm having presence in London, Mumbai, Pune, and Nasik. She is a recognized speaker and a respected faculty at reputed firms. She is an active member of national and global associations dealing with professional development, women, and youth empowerment. To bring the smiles over faces is one of her fondest passions. And I think her passion is a very noble cause for society at large. With this, now I request Ms. Sayali to take charge of the session. Welcome. Thank you, Preeti. Thank you, Charmi, and thank you, everyone. Just a request. Only my mother feels that I have a photogenic face, right? And still, I am facing my everyday camera Zoom meeting. So I would love to see you in person. Otherwise, see, I'm just doing one thing. We also feel the same. So I'll just put like this, and if I keep talking to you, how does that feel, right? Unless you are, I know there are problems, there are family around you, there are so many stuff that you're doing at one point of time, but I would love to see your lovely faces too. All right, so let's keep this session quite interactive in a way that it's an open forum. Whatever you want to know, there are a plethora of the topics that we can cover, right from group discussion to personal interview, to how to upskill ourselves, or maybe if you want to have any certifications, or can I go for like the way I did it. I'm chartered accountant from Institute of Chartered Accountants in England and UK, England and Wales, which is in the UK, right? So we have treaties. We have treaties with Ireland. We have treaties with CPA Australia. We have treaties with this England and Wales. So Canada as well, for that matter. So we can talk about that also. So I would love to know from you that what do you want me to talk on. It's an open platform, it's open forum, there's no structured way to talk about. So wherever there is a pain area, I was fortunate enough to be there on boards for Credit Suisse, which is a Swiss bank, Deutsche Bank, which is a German bank, and then I moved from this investment banking to manufacturing industry, which is Smith & Nephew healthcare industry. So, and after that, since pandemic happened, and there are so many other things that are happening. So how can we be there
to such lofty positions, or to basically how to evolve ourselves, right? That does not really mean that you have to work, even if there is a gap in your career, or even if there is some commitment, some family commitments, that you couldn't pursue whatever you like to. But that is not the showstopper. We should move on ahead, right? So all that and many more. So I would definitely love to hear it from you, that what is that particular aspect that you feel that there is a challenge. I don't know whether I'll look good in this, or whether I'll be best fitted to that job, or what should I do, whether I should continue to my practice, or I should find out some job, anything that is on your mind, troubling you. And then probably with my limited knowledge, I would be able to answer all of that. Fair enough? You can just unmute yourself and talk. If you're not comfortable, you can just chat. So it's an open forum. So I think let me cherry pick. Suchi, what do you think we should be doing here? Hello. Okay, so mine is like a different story wherein people have taken a break from their work and they wanted to start afresh. Mine was like I started my studies at quite a later age. Right. So like I come from a very like a little conservative family. So I got married at a young age and I started my CA journey like at the age of around 30. Wow. And luckily, by God's grace, with the family responsibilities and everything, I could do my CA. See, I think the real story is real fighters are here with us, and not, so I would definitely give one salute to Suchi, that you are starting CA after the age of 30, which is phenomenal. Like, I would never have thought about doing it that way, because I know how rigorous it is, how rigorous it can be with the family responsibilities. So see, we got to talk to each other. Rather, I learned something from you. We all are fighters and we all are achievers in our own way. Correct. So for me, it's been like since the family is little conservative. So after doing my CA, I took up a job for a year because I wanted a good exposure and it definitely boosts your confidence. Yes. So for a year, I joined a CA firm. Mhm. Then after that, again, my family wanted me to join their family business. Right. So for last 3 years, I have been doing the internal audits, the income tax returns, the GST returns for them. But now again, after this 3 years, now the pandemic's also over. And I think I'm little free from my family responsibilities as my son is 18-year-old and he's... I'm so jealous. So, and even he's going out for studies. And also, I think now I want to pursue my aspirations and I want to take up a full-time job. But since I have a limited exposure, like for last 3 years, my activity was restricted towards my family business. Correct. So my confidence is a bit low. Mm-hmm. Like if it comes to GST and income tax returns, my knowledge is all updated. But I don't know how do I apply for the job? How do I pursue? How do I take it further? Wow, yeah, Suchi. I mean, my son is not even 8 years old. Like, my elder daughter is 7 years. So life is set for you, yeah. I mean, so yeah, no, I know. So Suchi, what I mean, for everyone, if you want me to talk a little bit about what it takes to be there in investment banking, I would love to tell you, what are the general roles and responsibilities are there. Probably I'll be able to tell you about the manufacturing industry, that what it is there, right? Because if I put myself in your shoes, and if I think that, okay, fine, which industry now I need to be there, okay, so that search would be, number one, what is my interest areas? Agar hum GST audits, everything I've been doing for my time, so there will be one predominant question I will ask to myself. Okay, fine, I've done it GST. How can I get into investment banking, or how can I get into international, MNC culture, or things which I've never did it? To break that myth, let me tell you, it is not something that it's a big no-no, that you cannot ever do that.
Fortunately, I was like you, but prior to that, I was from mid-size city, mid-size firm, Nasik se thi. My dad passed away when I was pursuing my intermediate, and he was kind of sole proprietorship, having 2,000 plus clientele, and I had no other option to be there, and I always wanted to be in his shoes, right? But then while doing that, always wanted to have a global exposure. So post marriage and this thing, then I'll be there in Pune, and that's exactly how I explained it to my first recruiter, which was Credit Suisse. I went in there. My first job was to go to New York to do the federal reporting. A federal reporting का ढकी फो मालूम नहीं था. I was absolutely clueless. I'm talking about 15 years ago, where having internet was a luxury. Yeah, we were having this big desktops to talk, to work on. So I'm talking about that arena. But now world is quite open, Suchi. What I can hear, utilizing this platform, what I can do for you is, like, I can quickly give you some brief introduction about investment banking. I'm not sure which part of India you are, if you are in Pune or Mumbai. Mumbai. You're in Mumbai. So there are like so many options available. We have UBS, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, Nomura. So there are these options open for you if you want to, kind of go ahead and look forward. Then if I want to tell you that, okay, fine, investment banking is not something that 9 to 5 pura itna stressful, I wouldn't be able to do that. So then I would ask you the next question: which area you would love to see yourself as? Like, कहाँ पे जाना चाहते हो? What do you want to achieve? या फिर ये अच्छा लगता है लेकिन इसका job description नहीं पता. So probably ये मैं बता पाऊंगी कि क्या होता है. For आज सुबह ही मैं पुणे के साथ थी, and there was one girl she asked me, ma'am, I got shortlisted, but I don't know what is FP&A roles are. So that is financial planning and analysis. So I don't know whether I would like it or I don't like it right now. So, and that's how, so it rotates. And I said, I know, what do you mean by FP&A roles? So Suji, I would love to hear it from you, that what are your interest areas? कि क्या आपको अच्छा लगता है? Where do you see yourself doing things happily? या फिर आपको यही जो आपका core area है, which is GST or audit, do you want to scale it up like internationally? For example, जैसे UK में there are clients and you get their works done from India. So your partner in the UK, they'll charge in the GBS, and you get paid in rupees. So it is always win-win situation for all the three parties, right? So do you want to scale it up that way? So there are multiple options, and so according to your interest area, probably I'll be able to answer you. Okay, fine, then this is the way that I know. Frankly speaking, now when we hear all these terms like investment banking, mergers and acquisitions, like transfer pricing, international taxation, so frankly speaking, I don't even know the basics of all this. What exactly it covers? I've been into a very I've been always into normal taxations and all those fields, but I would want to explore it. I like to get into the details And then vouch for yourself whether you really like it or you don't like it. Because see, कैसे हो सकता है सूची, now that we are into conventional practice, तो हमें ना अपने clients सामने रहने की आदत रहती है, हमें उनसे बात करने की आदत रहती है, हमें उनसे details लेना. There is a connect between the client, the end user and we. Whereas अगर यही चीज हम international investment banking में लाए, तो उसमें बहुत सारे बहुत सारे स्टेप्स आ जाते हैं, बहुत सारे टीम्स आ जाती है फाइनल एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए. तो मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ what ever roles and responsibilities wise what we can do. So typically there are, if everybody is okay with this, right, Sushma, Charmi, Revati, Natali, Gitanjali, do you want to know more about it? Mayuri, Meenakshi? Yeah, do you want to know more about this? या फिर मैं सूची को one-on-one text करके भी बता सकती हूँ, not to just take more time of the forum. Actually, I'm also looking for
overseas opportunities because my husband is going to shift in USA Okay. likely by the end of this year. That's why Okay. I'm also looking for, even I'm going to ask us question on this. Okay, so आप अगर Gitanjali, if you want to go into US and just a second, Suchi, I'm just trying to extend the things to her and link it up so that she'll have the entire. So Gitanjali, आपको ये देखना पड़ेगा कि which state you are going to be there in US, because the CPA of US would be different state wise. Okay. Okay, if you want to perceive that, I mean, if you're ready to learn again, Yeah. which, and I'm not sure how long, I mean, I'm not going to ask these personal questions to you, but how long you will be there. If you are going to, if you are looking it as a long term and you'll be there, then I would definitely advocate, definitely suggest that you should have this CPA degree with you there, so that, you know, it will add the edge to your candidature. That's Yeah. number one. Number two, you cannot directly go there and set up your practice unless you have valid visas, and there are so many other complications, right? If you, for example, if you're there, you open your office, I get into your office, तो आपको मेरे insurance से लेके, you have to bear my social security and everything, so that is lot much of headache. Yeah. So it'll be a easier way for us to get ourselves employed Yeah. with somebody who's already there. Yeah. That way it is easier. If you're going on a dependent visa, if you're having special visas, so visa things, you'll have to, you know, I won't be able to suggest, I mean, talk to you right now about that, but how we can get it, we'll definitely do that. And meanwhile, agar Gitanjali aapko milta bhi nahi hai jobs, there are some kind of volunteer works are happening, right? So they don't pay you as in a pay slips or checks or something like that, but they definitely give you some gift cards or some vouchers or something, you know, pocket money apna apna nikal jata hai types ka, right? So that is the another way to look at it. Even if you don't get a valid visas there, work permits agar nahi bhi mile Gitanjali, then there are such ways where you can volunteer your work and earn. Yeah. Yeah, I'm planning to pursue the CMA. CMA, Because CIMA there's or some CMA? CMA, Okay. Certified Management. Okay. Why don't you just then go for CPA? It is, That- I think, for 15 months duration. It will take. Okay. It take a while. Okay. CMA is how long? It can be clear within 6 months. Okay. Okay. But if you're looking for some short-term courses, then there are FRM. Okay. Okay, so FRM is another course which will give you the opportunities into risk-related profiles. Okay. When I mean risk-related, that means Basel management, your credit risk, operation risk, market risk. So that those are the things that you can do with it, with the FRM certification, or just to get no. But then diploma in IFRS wouldn't be helpful for you. Yeah, actually, I'm also You're going to go to US, and US has their own US gaps. So probably you wouldn't be, I mean, that'll not be helpful for you. Okay. So my take on this would be, even if it is for 15 months CPA, it will reap you long-term benefits, because you never know where the life will take you next. Yeah. Having that degree on your profile will add more brand. Even if, I mean, whatever the arrangements would be, even if you come back to India and put yourself CPA, then people who really want to get their work done for USA, so they have a strong candidate, you know, who can work for them. So even if you think that is a long route, but that will be sustainable route. CMA, I'm not really sure whether it is that well received or that well, you know, kind of. Even if you're pursuing CPA there and you put it in your CV, that holds a good weightage as well. Yeah. I think so. CMA is equivalent to cost accountant in India. Is it? Probably that's what I'm trying to tell you, that my limited knowledge to CMA
is the hindrance. But what I know, definitely I know about CPA. I have my few friends and colleagues who have done CPA and getting the benefits out of it. So yeah, I mean, Yeah, but or maybe because there will be some colleges yeah. like MBA. You can do executive MBA another 12 months. How, but then now the things are, you can, yeah, just a moment. And how do I pronounce your name? I'm sorry. Gitanjali. No, not to Gitanjali, to Norana. I am not, you're not audible, bilkul hi. No, can't hear you. No? Is it only me who cannot listen, or everybody? Even I cannot listen. We can't hear you, Norana. Okay. Okay, Meenakshi, I'll try and cover. Madeline. Is it Madeline? Something will be silent in her name. But I don't want to mispronounce her name. I know that. All right, sorry, Gitanjali, you were asking something by the time I Norana is the. No. Yeah, actually, I'm going to go back to study after, we can say, gap of 10 years. So, so if CPA is quite difficult in that case, that's why. Nothing is going to be that easy, yaar. Maggie banana also takes a lot of time. We have to think, buy, patela lo, pani ubalo, usme dalo, khao. It's but just because we don't feel it as a effort. Yeah. But yeah, studying can be challenging. But just with the CA degree, सोचना because पड़ेगा. I have completed my CA in November 2011. Oh, okay. नहीं, तब तो सोच सकते हैं, but we'll have to settle on lesser, lesser monetary Hello? benefits. Yeah, hi. Now we are able to hear you. Yeah. So first of all, just tell me, how do I pronounce your name? She's gone again. Okay. So when I just yeah, say sure. something is happening. Yeah. So Gitanjali, probably I'll give you the insights. Can Don't you help worry me about with this, Louis? Yeah. So Norana, mute yourself. You're audible to us now, but you're not visible. Anyways, so Gitanjali, what I'm trying to tell you is we can still try to be there. We can still talk to people around. I mean, depends which state, which city you will be. But there are definitely good banks like Bank of America, और ये भी हमने जो भी बोले Credit Suisse का भी वहाँ पे head offices है, न्यूयॉर्क में है, न्यू जर्सी is like अपने मारवाड़ी गुजराती people are always there in New Jersey. तो आप कहाँ पे सैन होजे में, if you go there, then there's a lot of like Google things are happening. So जा तो जरूर सकते हैं. That's not a showstopper that you don't. I can totally buy it. कि यार, after 10 years of the career, if you ask me to unlearn and then learn, that can be challenging. But yeah, let me think about it, what we can do. And then meanwhile, if I try and tell you about this investment banking, then you can connect the dots and then apply. That will be my assistance to you. Yeah. I just want to know, what is FRM? Means can you, FRM is financial risk management. okay. That's again a quick course. 6 महीने का एक sessions रहते हैं. Within a year, I believe you can get it done, and not so expensive. Some 15,000-20,000 rupees. Vis-a-vis if you do CFA, which I've done, so CFA is again a big dent to pocket, and 3 years, right? So the courses but you cannot. I mean, if you wish, you can do diploma in IFRS from ACCA. We do have institute ka bhi apne, but then if you do it from ACCA, then you get you get that flavor of getting it done. Why I'm telling you that you can still do it, because not necessarily
US will only have US entities. I mean, that companies will have only US entities. They are globally, right? So Yeah. not so you can utilize your IFRS examination. This thing, I mean, utilize your knowledge there. And again, it is 15, 20, 30,000 rupees and accounts hai, so you can easily crack it. You know, Yeah. because you've been into the practice, you don't have to really study for that matter. Yeah. That is something that then I can advise you for your upskilling stuff. Yeah. Actually, currently I'm working into tax field, direct and indirect tax. Then why don't you just try or uplifting yourself in FATCA, FATCA? Yeah. Yeah, I know that. You know the term? Yeah. So Yeah. I'll write it for everyone. So FATCA is another क्या बोलते हैं उसको, the hot cake in the market, if you Yeah. know that. Yeah. Yes. So FATCA का थोड़ा मोड़ा अगर पता है, आपको अगर treaties के बारे में पता है, so Yeah. treaties and how can you do that? I know, Gitanjali, how can I Yeah. help you? There is a I've done a post qualification course of international tax. My I have, my okay, exam is due. I'm going to give that in May 22. perfect. Then there is a company which Yeah. is going to help you. It's called as Avalara. Okay. Yeah. Yeah. You know about this company? Yes. Yeah. So Avalara is US based company. It is going, and they are looking for chartered accountants. I know for sure, because the I MD of got free Avalara, membership for that. yeah, because that MD of that company is friends to me, and we just talked just this week, and he was just yeah, we want to expand and we want to have this Pune office get rolling and this and that, and we are into tax expertise. See, now Yeah. you can definitely try Avalara. Definitely try Avalara. But will they give me opportunity to shift my means if after 1 year I want to shift to USA, whether they will means allow that? No, I mean US only. I'm asking you to apply Okay. because Because you gotta go there, right? yeah, they are having opening in India also. They are also. Yeah. Yes. They do have opening in India also. I mean, that, don't quote me. It is offline discussion. Yeah. 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 So these things are happening around. They are expanding. They are looking forward for the candidates, and you know it better way, right? So please, आज ही जाके फटाफट वो Avalara पे देखो. Write them an email. Tell them that I'm interested, because they also take time, their sweet time, to come back to us, and you know they kind of, why would they do it otherwise? So we Yeah. have to hammer them that, you know what, do it. I'm interested. Tell me, I am interested. Tell me. If not, next time. So by the time you are there, you will be well placed. Yeah. Yes. Yes. Yeah. And you never know, if you get opportunity, you straight away start working work from home to chali raha hai. Yeah. Yes. Right? So Avalara, try it. Chalo, one sorted. Suji, I have to come back to you, but let me take the entire सारे लोगों के क्वेश्चन ले लेते हैं, एंड फिर वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, देन फिर मैं रिलेट कर सकती हूँ सबके क्वेश्चन. जैसे somebody asked me कि I've done my, and Meenakshi, don't call me ma'am, you can just call me Sayali. Have done my diploma IFRS, currently pursuing DIIT. I would like to know more about FP&A roles. Okay, I'll tell you. Definitely, I'll tell you, Meenakshi. तो FP&A role मतलब क्या है पता है क्या आपको? Financial planning and analysis. What does that mean is like we are talking about the cost side of the organization. है ना? हम cost side के बारे में बात कर रहे हैं. अगर हमें, if we understand this overhead, we are doing this overhead distribution, right? In the costing, everybody needs to take their part of the cost elements. So FP&A role in another way is like that only, that we are managing the costing. It's a cost element. So what that means that you will be doing more of budgeting, forecasting. There will be expenditure governance, there will be savings. Okay, so you will be analyzing every minute detail, that acha, last month this was this, and then why this month your expenses are more or less, your budget is this, then why did you go up or less, why the vendor is this, why the saving is not met. And then there will be run the organization, या फिर change the organization. Yeah, ऐसे बड़े terminologies के expense रहते हैं. You talk to finance director directly. You help them to choose the vendors.
that, you know, this vendor or that vendor. If this vendor, then what are the plus and minus? If that vendor, then what is the plus and minus? What should be the payment क्या बोलते हैं उसको, पेमेंट गेटवे क्या होना चाहिए, how 30 days due or 60 days due, how do we do that? So that is a lot about this FP&A role. If you think that you have business acumen and you think that you like such kind of work, then this is in investment banking in general is called as FP&A roles. Okay, this is financial planning and analysis. That's one aspect of it. If you just get out of this international investment banking stuff, and in common parlance, what FP&A roles mean is like managing your finances. Again, it boils down to this only, like cost, saving, and there's a lot of analysis. Where to invest, how to invest, what are my opportunities, what are my returns, right? Whether it is feasible, viable, that I should invest in this or I should invest in that. What will be my employment cost? Agar mera vision mission is to reach to that particular level, then what all I would require to meet that. So anything, any financial analysis. So if you think about any balance sheet that we have, so how do you analyze that balance sheet? That can be another aspect of FP&A roles. Yeah. So in ekdam layman's language, I try to explain it to you. Ma'am, currently actually, sorry, Sayali, currently I'm doing the same thing in our family business. Okay. Previously working in a government company, so I left the job and I joined my family business. For last 4 years, I'm into financial analysis, and again, same like Suchi, I had to do returns and all that stuff. But I just want more exposure in the corporate world, because again, small enterprise have their own process oriented nahi rehta, right? I and know. it's quite like you don't have strict processes and all that. So I want to learn all that things. Though if you are Puneite, Mumbaikar, I don't know. Mumbai? I'm actually right now at Kolhapur, but I will be happily relocate to Pune, so that will be fine with me. Yeah, फिर कोल्हापुर में पण there are so biggies यार. Kolhapur also have I mean, agriculture industry wise they are so good. One of my connects, Maniyar Tires. Okay. Is it a good name there, Maniyars? Maniyar Tires, no. I forgot that. That's a big group, like large group. I'll get back to you with that name. Okay. But they have their own industry. Okay. Where this is all what you are doing right now can be helpful. But let me think in Kolhapur what we can do, being there, taking the advantage of being there, and what else you can do. Let me think about it. It is not ringing any bell to me that who will be able to tell you that acha ha idhar opening hai aur ye kar sakte ho. If not, then come to Pune. Pune mein to bahut sare. Pune mein to I'll be able to tell you, this company, that company, this company, that company. Yeah, because for Pune also I'm trying from quite some time. I'm applying for the jobs, but I'm not getting any calls because I don't know what's the issue. But issues are, there is only one issue: demand and supply game. When there is a demand and if you are available, and then that's that. Plus, if you are able to exhibit your right skill sets there, then it's a plus. बस उतना एक ही problem रहता है, बाकी हमें आता नहीं है, that's not the issue. We cannot do that, it's not the issue. The only thing is the timing and the networking, which I'm going to talk. Now we are what, kitna, how many? We are 20 CAs got to know each other. So again, this is my networking. Kal ko utke agar Suchi wanted to get there in Kolhapur, I know Meenakshi can help. Right? So this networking where we really fail miserably. अपना networking पता है क्या होता है? Just kitty party या फिर अपने बच्चों के जो स्कूल रहते हैं वो वाले फ्रेंड्स. ऐसे मीट एंड ग्रीट सेशंस में हम कब जाते हैं? कभी नहीं जाते. तो हमको लगता है कि यार वी आर नॉट रेलेवेंट देयर. मैं तो सादा बेचारा, मेरा मिड साइज फर्म से मेरा ये है और ये बड़े लोगों से बात करके क्या होगा? एंड दैट्स वेयर वी फेल.
and that's where we do not establish the networking, and that's where we do not get the insider information like the way I got it for Avalara. Gitanjali ko help ho gaya. So promise me one thing, after this we are going to get in touch with each other, talk about each other, talk about personal issues, or maybe मैंने ये अच्छा किया, you can take good feeling out of it. ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करना पड़ेगा, otherwise मीनाक्षी बहुत difficult है. कौन जानेगा हु इज मीनाक्षी, मुझे क्या पता, मैं क्यों दूं. इवन इफ यू आर देयर, मेरे आंखों के सामने अगर सूची है तो मैं सूची यार तुझे करना था, मुझे मालूम है, जस्ट गो एंड गेट इट. जो मेरे आंखों के सामने वही होगा, वही होता है, और इसीलिए हमें जॉब्स नहीं मिलते. ये monster.com या फिर naukri.com, इस पे मजा नहीं है, मतलब नहीं आएगा उस पे. जो हमें we get a call from this consultants, right, the agencies, but then those agencies also cater to them who think that, you know what, she is in touch with me, and it is like it's a advertisement gimmick, more in their eyes, better the opportunities, वैसा है ना. Yeah, but I think so to get the opportunity in Big Four is also quite difficult, because if you are not having any background in Big Four, then even they are not choosing you even for the. Yes, I'm not denying Gitanjali. I'm not denying that they are just not doing this. Yes, they are doing like that. But you know what? A deserving candidate plus the referral from a good resource. Yeah. Magic wand. That's what the referral is more important. Yeah, referral is the problem. Again, it comes We get to a call. networking. See, at least we get a call with that magic wand. Who is the referral? We get a call. Uske baad mein to it's up to us, right? I mean, that's where our things are. And वहाँ तो अपन ने नहीं चूकना है. वहाँ तो एकदम इतना class और crisp और smart ये करना है कि nobody should. I mean, हमें पता है क्या, हमें ना जब हम ये देते हैं ना, इंटरव्यू लेते हैं ना, then we have to give a company reason that why I am rejecting Meenakshi. Even we have to justify that why Meenakshi is not a better fit to that particular role, right? तो जितना इंटरव्यूअर पे भी है उतना इंटरव्यूई पे भी है, मतलब उतना ही प्रेशर है दोनों साइड से कि यार मुझे ले लो, और मैं इसको क्यों नहीं ले सकती, इसके मुझे रीजंस देने पड़ते हैं. और वो रीजंस क्लूज कहाँ से आते? द मोमेंट वी एंटर इनटू इंटरव्यू रूम, वहां से वी पिक अप कि यार ये अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा नहीं लगा, दिस इज समथिंग रॉन्ग, दैट इज. एंड मोर एवर ये ना सब पर्सनालिटी एस्पेक्ट को हम ग्लोरीफाई करके रिजेक्ट करते हैं. और एक आधा टेक्निकल अच्छे से नहीं गया और आपने दिखा दिया हो, नो अब तो मुझे नहीं आ रहा, वो दिखा दिया एकदम ऐसे ढुस हो गए. एंड दैट्स वेयर वी पिक अप. You know what? She doesn't have confidence in herself. You know what? अगर ऐसा कोई stress situation या फिर ऐसा कोई कुछ आ जाता है, then probably she'll not be able to handle it. क्योंकि there are going to be difficult conversation. There are going to be some nasty people asking some nasty question, crunching our egos. But if you do like this, oh no, what are you talking like this, right? तो थोड़ा सा उस point को हम खींचते, glorify करते और reject कर देते. अगर हमें रिजेक्ट करना है तो लाइक दैट. Yeah, so that is something I would like to talk about. So एक मिनट, who's talking this? So Kusum is telling, I passed in 2011, worked in CA firm about 2 years, full-time audit taxation, but I have long break of about 8 years. Family response. Get back work. I have lost the confidence from registrar. I am from small city Bhavnagar and small city one part-time. Please advise if I want to get into a new area of work, what course should I do in Bhavnagar? Okay, Kusumji, what I can do, what I can tell you is like having a break is not a problem. Everybody has a break. मैं भी break पे हूँ. Even I'm in break. I'm not associated with any corporates right now. Okay, but the beauty of that break is like वो अब खत्म हो गया ना, तो आप ना there are many courses available. अच्छा, अब भावनगर में ही रहने वाले हो, भावनगर में भी ये करने वाले हो, तो अगेन एक चीज आ गई जो है अपना नेटवर्किंग.
ओके तो नेटवर्किंग से तो हम एक दूसरे से कनेक्ट हो ही जाएंगे. अगर मुझे कुछ गुजरात का काम है तो मुझे डेफिनेटली पता है कि कुसुम जी विल बी देयर एंड वो कर लेंगे मेरा काम. तो सबसे पहले आपको नेटवर्किंग कैसे बढ़ाया जाए उस पे ध्यान रखना है. अभी आपका WRC लेवल पे ही आता है, राइट? भावनगर कम्स अंडर WRC लेवल, राइट? यस मैम. तो WRC लेवल के अलग अलग प्रोग्राम्स हो जाते हैं, अलग अलग इनिशिएटिव्स रहते हैं. गेट एसोसिएटेड विद इट. मुझे पता नहीं अगर आपके इसमें रोटरी क्लब या फिर लायंस क्लब जैसा कोई क्लब्स है तो उनके साथ आप अटैच हो जाइए. हाँ ऐसे ही, मैं ये नहीं बोल रही कि फुल टाइम चैरिटी करो, बट एक आध दूसरा प्रोग्राम अटेंड कर लिया, हाय हेलो कर लिया. फिर देयर आर ग्रुप्स लाइक BNI. पता है आपको? एक मिनट, आई राइट इट हियर. BNI. But institute has like recently I heard it was not allowed for CAs. No, I think I'm right. I know, even I felt that way, Harshada. That was my information. But मेरे बहुत अच्छे दोस्त वो BNI में हैं and they're doing well. तो ये हमें मतलब समझना पड़ेगा कि कहाँ तक अपन जा सकते हैं और कहाँ नहीं जा सकते. फिर then there is some I mean this specific, I mean जीतो करके है, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ओके सो उसके साथ भी आप जा ही सकते हो, राइट? तो ऐसे सारे जो नेटवर्किंग वो वाली चीजें होगी. तो नेटवर्किंग हमने कर लिया, नेटवर्किंग के थ्रू हमें पता चल गया कि अच्छा ठीक है यहाँ पे काम है. और ये ना लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इमीडिएटली आपको इसके बेनिफिट्स नहीं दिखेंगे कुसुम जी, बट बाद में आपको हमेशा दिखेंगे. हाँ, Actually, the problem is I came in Bhavnagar through marriage, not through birth. So, okay, right. So I have very less contacts. हाँ, but then you have to create a contact. एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा बनता है. Yes. Right? But you have to. There is no other way around. Otherwise नहीं कर पाओगे. Right? हमें contacts करने पड़ेंगे. जबरदस्ती नहीं है. I know there are people who are quite introvert. They love to be with themselves or their family members. But that should not be the problem for connection, establishing connections. I'm not asking कि हाँ every now and then you arrange for a kitty party, ask people to come over home and nothing of that sort. Just simple phone call. Hi, hello, how are you doing? I just thought to talk to you. Is it a good time to talk to you? And talk. And no, acha, what is happening? Oh, right. Is there any opportunity? Oh, right. What different are you doing? Just a simple normal talk. You have to do it, कुसुम जी. Otherwise ना हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं और हम ऐसे लगता है कि यार बिना फालतू का किसी को ऐसे फोन उठा के कैसे बात करना है. वही तो है ना, वही फीलिंग आती है ना यार, ये क्या सोचेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, छोड़ दो. कुछ कोई भी कुछ नहीं सोचता है. और भावनगर का इंस्टीट्यूट रहेगा ना, हाँ तो सबसे पहले उधर जाना है. उससे एसोसिएट होना है, उनसे पूछना है. सो दैट्स वन. टू मच अबाउट नेटवर्किंग. सेकंड चीज, मैंने ये नेटवर्किंग का ही पहले क्यों लिया कि सी आ गया, वंदना जी इज टेलिंग अस दैट किंजल सीए घिया भावनगर, यू अप्रोच हर. देखो नेटवर्किंग से और एक नेटवर्किंग बढ़ गया. ऐसे ही बढ़ेगा आपके साथ, राइट? तो सेकंड थिंग, ये नेटवर्किंग से आपको पता चलेगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है भावनगर में, क्या क्या होता है, क्या ट्रेंड है, कितना सैलरी देते हैं या फिर कितना पेमेंट कैपेसिटी है लोगों का, राइट? एंड दैट वे यू कैन केटर योर सर्विसेज टू देम. That is number 2. Number 3, when you get hold on the market, that you know what people are doing and how they are doing, then you can definitely arrange yourself to kind of, क्या बोल सकते हैं कि आप तब अरेंज कर सकते हो कि अच्छा मैंने FRM करना है या फिर मैंने IFRS करना है या फिर मैंने CFA करना है या फिर मैंने कुछ भी नहीं किया तो भी चलेगा. या फिर हाँ, अगर कर भी ले तो इससे रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी भी तो होना चाहिए. तो मैं वही बोल रही हूँ, अगेन आई एम स्ट्रेसिंग कि ये अपॉर्चुनिटी आएगी कैसे, आएगी कैसे वो अपॉर्चुनिटी, जब लोगों को पता चलेगा दैट कुसुम जी इज गिविंग हर सर्विसेज इनटू दैट. Sayali, may I interrupt? Yes please, it's open forum, anybody can. I was just listening to your conversation. Like abhi last pandemic year, we also completed say forensic audit course.
Right. So I sit back and think कि मुझे घर पे आके कोई काम देगा तो ऐसा नहीं होगा. The way she said, Sayali said, you need to approach to the people. I started writing, or whenever I meet someone, I say I have already completed forensic. If any assignment, I will like to assist you. I will like Correct. to assist you because I have to get the exposure into that field. Because no one can straight away get the benefit, or no one can come and give you the work. We need to penetrate to the market. Social circle में जाना पड़ेगा. Everywhere you should be passionate. The world should know what you are capable of, and the world will then start absorbing you. Like अभी जितने लोग मुझे जानते हैं तो मैं बोल they know Vandana is equal to tally में कुछ भी question है तो वंदना को पूछना है. So that I have created my image brand by brick. It is last 15 years I am associated with that. So आप कुछ भी करते हो आपको उसके साथ अंदर इन डेप्थ नॉलेज रहना पड़ेगा. बट जैसे हर स्पीकर हमारा ये जो पूरा वीक चल रहा है वुमेन्स वुमेन्स इंटरनेशनल डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो टाइम एंड अगेन ईच स्पीकर इज स्ट्रेसिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स योर विजन बी क्लियर. आप क्या करना चाहते हैं, आप कहाँ से आए हो, आप क्या हो, उससे किसी को कुछ लेना देना नहीं. व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, व्हाट योर सेल्फ यू प्रोजेक्ट टू द वर्ल्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं भावनगर देखो हर इंसान कहीं ना कहीं तो नया होता ही है. फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने आएगा तभी भी वो नया ही होता है. नो वन नोज एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ. एंड बेस्ट पार्ट व्हाट आई लाइक सयाली ना इज वो मैगी बनाना है तो भी वो पानी गर्म कर रहा है पतीला. मैं तो साला कभी रसोई घर में गई नहीं हूँ तो मेरे को टेंशन आ जाए. तो इट इज लाइक दैट इन अ सिचुएशन वेयर यू आर केप्ट, इफ यू टेक इट सीरियसली. मतलब मुझे पहले से ही मैं डर अपने आप को क्रिएट करना पड़ता है. इट्स फर्स्ट क्रिएटेड इन माइंड कि यू वांट टू बी देयर, then you can be there. So start thinking. मतलब मुझे एक बार साला सीए हो गया ना, कॉन्फिडेंस लेवल 100% होना चाहिए. सीए इज नॉट खाने का जोक. नो वन कैन बिकम सीए. पहले तो वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना है कि एक डिग्री तो अपने पास है. अब उसको एनकैश कैसे करना है, काम कैसे लाना है, तो देखो कहीं ना कहीं सबको हाथ पांव मारना पड़ता है. हम लोग आज 22 साल से प्रैक्टिस में है, तो प्रैक्टिस को सर्वाइव करना भी चैलेंज है. जॉब वाले अदर स्टोरी होता है. इंडस्ट्री वाले सोचते हैं कल को वो अपने को दे देगा, रिट्रेंचमेंट आ गया. सो मेनी कंपनी शट डाउन इन कोविड. कहाँ गए वो लोग? अब वो लोग क्या कर रहे हैं? हाउ दे आर अगेन जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट. दे देमसेल्फ विल बी डूइंग समथिंग. तो हर इंसान को खुद के लिए लड़ना है, खुद के लिए मेहनत करनी है. एंड वी मस्ट थैंक WRC कि ये नेटवर्क फोरम हमारे पास है. देखो जैसे उसने डाला कि मैं भावनगर में नहीं हूँ तो इट क्लिक्ड मी कि आई नो किंजल इन भावनगर, लेट शी गेट अप्रोच टू देम. तो जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश लोग हैं आप उनसे बात करो. First thing, never underestimate yourself. Second, no one is superior. Each one is equal. Maybe हर एक का experience और exposure अलग रहता है. ये चीज अपने अंदर बना दो. अपना confidence कभी भी देखो, someone may be always one step ahead in your life. तो आपको उनको acknowledge करना है और जो नीचे है उनको आपको हाथ पकड़ के ऊपर लेके जाना है. That is the life. That's the simple story of the life. तो पहले खुद पे confidence create करो. आप कुछ हो तो ही आप किसी और को कुछ दे पाओगे. तो हम तो ऑलरेडी कुछ है, हमारे पास सीए डिग्री है यार, इससे ज्यादा क्या चाहिए लाइफ में. मुझे कभी भी समझ में नहीं आता क्योंकि हम सीए तब बने थे जब 100 में से 5 लोग क्लियर करते थे. बिलीव मी, इन 98 व्हेन आई लॉस्ट माय डैडी इन 1990, तो मैंने सीए 89 अगस्त में ज्वाइन किया था. नथिंग स्टॉप्ड मी. व्हाई? बिकॉज़ देयर वाज अ जिल विद इन मी एंड द यूनिवर्स हेल्प यू इफ यू वांट टू हेल्प योरसेल्फ. Perfect. I'm motivated now. So nicely said. So thank you. Thank you, Vandana ma'am. हाँ, so that's that. I mean, अब मयूरी जी बोल रहे हैं कि क्लियर्ड माय सीए इन 2017, डीसा दिया बीच में और 80 देना बाकी है, फाइनल असेसमेंट देना बाकी है. सो व्हाट शुड यू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर बेबी एंड इतने अच्छे से आप ये कर रहे हो. डीसा देने के डीसा का 80 रहेगा है ना वंदना जी? आई मीन कब रहेगा उसका थोड़ा सा बता पाओगे? साइट पे आते रहता है वो लोग का. So they will be communicating and generally the email comes. ये एक सॉरी अभी वापस से इंटरप्ट करूंगी. एक चीज जो मुझे हमेशा से ग्रज है, हमारी फीमेल सीए बोलो या मेल सीए बोलो, कि टेक इंस्टीट्यूट फॉर ग्रांटेड कि वहां से कोई मेल आया तो खोल के पढ़ना ही नहीं है. मतलब जंक मेल आ रहे नहीं. हम अगर वी शुड फील प्राउड ऑफ आवर ओन क्या बोलते हैं कॉमरेड. हमारे पास ऑलरेडी लाख पीपल आर देयर. हमको पावर क्यों मिला, साइनिंग पावर? बिकॉज वी आर
गेटिंग मेंबरशिप ऑफ दिस इंस्टीट्यूट है। अगर हम ही उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, हमें उसका प्राउड फील नहीं होगा, थर्ड पार्टी क्यों तुमको प्राउड फील कराएगा? तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड एनी कम्युनिकेशन ऑन द WIC शुड बी टेकन सीरियसली। हमें हमारी वेबसाइट को चेक करना चाहिए। ICI की वेबसाइट कितने लोग जाते लिखते हैं? There are so much connects are there, so many free softwares are available for startup। अगर आप अभी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, आपके पास नहीं है पैसे, तो TDS का सॉफ्टवेयर फ्री में मिल रहा है, GST रिटर्न का सॉफ्टवेयर फ्री में मिल रहा है, तो करो ना, फिर रिसर्च करो, सब कुछ अवेलेबल है यार। हैव टाइम, सॉरी यार 80 का पूछा मैंने, सबका बता दिया। सयाली बोले नहीं, of course it's open forum. Please वंदना जी, we would love to hear it from you as well. ऐसा कुछ नहीं, मैं सिर्फ नाम के लिए यहाँ पे आई हूँ। We are equal, हम बस exchange कर रहे हैं thoughts को। क्या हो जाता है कि अभी देखो ये ऑनलाइन असाइनमेंट बेसिस का जो पूछ रहे हो, आपको इंस्टीट्यूट का वुमन पोर्टल भी था, तो क्या हो जाता है, वी चार्टर्ड अकाउंटेंट आर पोस्टिंग कि वी आर अवेलेबल फॉर वर्क। अब इंडस्ट्री को पता होना चाहिए कि दिस प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल। तो जो लोग इंडस्ट्री साइड में है, मैं हमेशा WIC में यही बात करती हूँ, दोज आर हैविंग कनेक्ट्स विद द कॉर्पोरेट्स ना, दे शुड मेक इट मोर वायबल एंड मोर इंफॉर्मेटिव दैट देयर आर thousands of CA females पार्ट टाइम या असाइनमेंट पे काम करने के लिए अवेलेबल दिस टाइम। तो वो जो ब्रिजिंग द गैप है ना, वो मेरा पिंकी से वही बात हो रहा है कि प्लीज अगर तू RCM बनी है तो तू इस एजेंडा पे काम कर कि हम उनको काम कैसे दिलाएं। हर इंसान को प्रॉब्लम यह है कि काम कहाँ से आएगा। एवरीवन इज एक्चुअली स्ट्रगलिंग टेक्निकली, इट इज नॉट कि रेडीली अवेलेबल है, और सब जॉब नहीं कर सकते वो 9 to 5 का, वो पॉसिबल ही नहीं है वो। एंड अनदर स्पीच कभी भी मैं बोलती हूँ, मैं भी वही बोलती हूँ कि वी आर इन अ फ्लेक्सिबल प्रोफेशन, कि आप 50 साल के बाद भी चालू करो तो भी कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। दिस इज द ओनली प्रोफेशन वेयर एज इज नॉट काउंटेड, ओनली नॉलेज इज काउंटेड। आपकी स्किल सेट परफेक्ट होनी चाहिए बस। यू शुड बी शार्पनिंग योर स्किल एंड बी इन टच विद दोज हु कैन अपलिफ्ट यू। कोशिश करनी पड़ेगी, दैट्स इट। वंदना जी ये भी बता दीजिए ना कि ये पूनम जी से आया है कि ऑनलाइन असाइनमेंट बेसिस वर्क जो आपने अभी बोला कि है ICI का पोर्टल है। आई पोस्ट द लिंक, मैं यहाँ लिंक डाल देती हूँ सो दैट दे कैन टेक बेनिफिट। इवन नाउ द WIC स्टार्टेड ट्रेन द ट्रेनर, मतलब छोटे छोटे लोग जो SY BCom में रहेंगे या BCom हुए हैं, टेल सिनेरियो उसकी अच्छा मैं हूँ। हाँ, आई अप्रिशिएट दैट एफर्ट यार, हमें वो रिकॉग्नाइज। अच्छा उसमें भी फैकल्टी के लिए काम कर सकते हैं आप लोग, ऑब्जर्वर बन सकते हैं। अपना WIC की जो भी ICI की एग्जाम्स होती है, जब भी एग्जामर ऑब्जर्वर हो सकते हैं, एग्जामिनर हो सकते हैं। आप आर्टिकल लिख के ICI के इंस्टीट्यूट को भेज सकते हैं, उसका भी पैसा मिलता है। When you write article to ICI, ICI में आर्टिकल पूरा आपका पब्लिश होता है, तो आई थिंक 5,000 और समथिंग ऑड अमाउंट इज गिवन। तो अपने को वो अपॉर्चुनिटीज, देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, बट हम क्या चाहते हैं और हम किस में एक्सपर्ट है। एंड अंडरलाइन द वर्ड वी से एक्सपर्ट। बेस नॉलेज इज नॉट गोइंग टू गिव यू हाई फंडा मनी। अगर आपको प्रोग्रेसिव होनी चाहिए तो आपको एक्सपर्ट नॉलेज होना जरूरी है। और एक्सपर्ट कब आता है कि घिसना पड़ेगा आपको, मतलब 5 साल किसी के अंडर काम करोगे फिर ही आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाओगे, मतलब अनलेस यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। डॉलर CA। Sayali, I want to add something. I did a certificate course in public accounting and finance of the institute. So I have not given the exam yet, but I get an email every time when those exams are held that the exams are held on so and so date. So institute does communicate to the people who have started those certificate courses that when the exams are. So Vandana is right. People should check the mails actually, because they do inform us when the exams are being held by emails constant. That's it. हेलो वंदना मैम। आप पूनम बोल भाई, पूछे सयाली। अरे एब्सोल्युटली ऑल राइट, डोंट वरी अबाउट मी, एब्सोल्युटली। એટલે મને ટેન્શન આવે। अरे नहीं, बिकॉज़ प्रॉब्लम हो जाता है मेरे साथ कि मैं आगे फिर चालू हो जाती हूँ। हम सुनने के लिए बैठे ना, डोंट वरी अबाउट। यस पूनम, प्लीज शूट योर क्वेश्चन टू वंदना जी। या वंदना मैम, मैं बहुत बार वुमेन्स पोर्टल पे जाके मैंने लॉगिन भी किया है और मैं हमेशा चेक भी करती हूँ, बट कभी रिस्पॉन्स आया नहीं मुझको। जैसे आई एम विथ माई बेबी, सो आई कैन नॉट सिट 9 to 5 जॉब और सम
schedules. So ये flexible job I was searching about, so I was planning for online assignment basis or online job somewhere. So for accounting purpose, like हम बहुत सारे देखते हैं कि मेरे most of the friends have joined with accounting purposes. So I'm finding for it. So please guide about it, Sayali ma'am and Vandana ma'am. बोलिए वंदना जी. हाँ नहीं तबे सयाली बीजू का you can take it forward. I have taken the point. Each one of us are actually having something is missing link, so that we are on walking. So what I can suggest is that let's have some concrete work taking place. क्योंकि खाली बातें होती है यहाँ पे लेक्चरबाजी होके सब निकल जाते हैं. सबको यही बाद में होता है कि हमको कुछ ज्ञान दिया लेकिन रास्ता मतलब वो नहीं मिला. How वो नहीं मिलता है. क्या करना है वो सब बताना है. कैसे करना है वो मालूम नहीं पड़ रहा है. तो we are working on it. Let me also focus on it and give you answer. पहले तो उनको एक लिंक दे देती हूँ. In the meantime you take it forward the session. मेरे 5-10 मिनट मुझे ब्रीदर दो. मैं आंसर लेके आती हूँ. Yes. See, देखो ऐसे काम हो रहे हैं. अब वंदना जी जैसे अपने पास मेंटर है तो why should we worry? Neha, I read your points and I can completely understand the way you're coming from. और ये अपने typical मारवाड़ी families में होता है कि अरे थने why do you need to do that? क्या जरूरत है तुम्हें? Why are you pressing yourself so much? It's not mouth to hand that we are doing. We have enough with God's grace. But then again, Neha, where are you from? Then probably I'll be able to answer your questions. I was staying in Mumbai. Okay. And then after my marriage, I moved to a city which is near Lucknow. If you know of Kanpur. Oh, Kanpur. Okay. So that is there are no MNCs at all. No, I mean there are some corporates, but no MNCs. MNC, I know, I am sure about this. So. Oh, okay. So that is a practical problem that I can, when I say that we have a problem, then that's a practical problem. Because if you want to get into MNC work, Actually, it's difficult. I'm getting calls every day, like almost every day. I attend like 5-6 calls which are there from Naukri or Monster or whatever. So they are all okay with everything else, but they are like, we cannot give you a permanent work from home kind of a setup. We have to be there. We have to be there at least 2 days a week. I mean, when everything will be normalized, like new normal. And I don't think it's going to take a lot of time for things to get normal now. So 6 months maximum. Yeah. To And like, yeah, I also tried out some CA forms if they can give me some work on assignment basis. So even that is not working because even they want people to be there in the office. So I know. Then Neha, can been I tell trying to you fill wrong, like, outrightly? since like 6 I months. can tell you something offbit. Why don't you just start getting into ed tech, matlab education field mein? If you're so good at indirect taxes and you can still drive through, to start something on your own, start giving the knowledge of IDT to people. I think I have one connect. Hansraj Chug sir, pata hai aapko? He is into this. Let me share his number with you. But again, he's in Delhi. Oh, but you want to 9811207924. 7924. I also know him. He's a very nice guy and very cooperative. Hansraj G. Chug. He is based in Delhi. He's based in Delhi, but he has this indirect access का बहुत ज़्यादा work. But again, Kanpur, Delhi, but still you can talk. Or Teaching was actually not a profession I was looking out for, but still, I mean, I think then something might be better than nothing. Then I might get something else in future. That is okay, but it's not something that I was looking out for. Right. Do you think? Actually, I got a call sometime back from a soft skills trainer. He said that he had some courses coming up. He he offered me a course, which was some. And you talk about like upgrad and Udemy types, yeah. Yeah, 25,000 bucks somewhere around that. But it was not relating to taxes or anything else. It was proper soft skills kind of a thing, and they'll give me like my customers will be students basically. Neha, I know such kind of gimmicks are happening in the market. Yeah, so I mean, I didn't find it trustworthy. I even went to the website and checked, but I mean, I did not find it
या सो अगर ऐसा करना ही है, सॉफ्ट स्किल्स करना है, तो वंदना जी अपने GMCS कोर्सेज रहते हैं, अपने ओरिएंटेशन कोर्सेज रहते हैं ना, कानपुर ब्रांच भी रहेगी वहां पे. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप वहां पे डेफिनेटली जा सकते हो. दे पे अस वेल. 11,500-12,000 मिल जाते हैं टैक्स वैक्स कट के 2 दिन का. तो और आपका इंटरेस्ट है तो माइट एज वेल करो ना. इंस्टीट्यूट को भी तो चाहिए है ऐसे लोग कि जो सच्ची सच्ची में ऐसा टाइम दे सकते हैं, स्टूडेंट्स को अपलिफ्ट कर सकते हैं, लाइक दैट. इनफैक्ट हर जगह पे काम अवेलेबल ही है, खाली राइट पर्सन आर नॉट मीटिंग राइट पर्सन, राइट प्लेसेस. यस, दैट इज द ओनली इश्यू. वर्क तो हर जगह पे समुंदर है. हम लोग भी कभी कभी बोलते ना हमें अच्छा है, वो काम करने वाला नहीं. देयर इज अ गैप. तो नेहा, I think what I can give you like advice is like, one is to get into edtech. वही सबसे बेस्ट रहेगा, बिकॉज आई एम फ्रॉम मारवाड़ी स्टफ एंड आई नो व्हाट इट इज एंड हाउ कैन वी डू दैट. ये जो भी मेरे 16-17 देशों में काम हुए वो प्री किड्स हुए हैं. पोस्ट किड्स 3 बार ही मैं जब गई, और पूरा मेरे को जॉब ही छोड़ना पड़ा, बिकॉज माय यंगर सन, सो ही यूज्ड टू क्राई अ लॉट, एंड उसको लगता था मैं लंदन ही जा रही हूँ. उसको बोलना पड़ता था कि नहीं भैया, मैं पुणे ऑफिस में जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू कम बैक अगेन इन द इवनिंग. बट देन दैट्स वेयर वी हैव टू टेक अ कॉल, क्योंकि मैं वहां जाऊंगी और मैं वही सोचूंगी, यार हाउ माय सन इज डूइंग, हाउ माय डॉटर इज डूइंग. वहां पे भी जस्टिस नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे भी जस्टिस नहीं कर रही हूँ. तो छोड़ दो. इट्स अ चॉइस दैट वी मेक एवरी डे, राइट? तो मैंने फिर वो छोड़ दिया. मतलब ठीक है, इतना तो नेटवर्किंग है, इतना तो कॉन्टेक्ट्स है, सिटी मेरी अच्छी है, पुणे है, तो कभी भी मैं वापस जा सकती हूँ. और देयर आर अदर प्लान्स आल्सो इन माइंड, एंड वो कर सकते हैं. तो आई नो एग्जैक्टली यू आर कमिंग फ्रॉम, एंड क्या आपको पेन एरियाज हो सकते हैं. एंड स्पेशली इफ यू आर वेल टू डू फैमिली, फिर तो क्या ही है, व्हाई आर यू स्ट्रेसिंग योरसेल्फ. वो सबसे पहले तो वही चीज आती है कि जरूरत क्या है. वो जरूरत है ना, वो जरूरत हमारी मेंटल जरूरत है कि वी गॉट टू बी ऑक्यूपाइड. हमें पैसे की जरूरत भगवान की दया से नहीं है, बट वी गॉट टू बी ऑक्यूपाइड. तो है ना, फिर ये कबर्ड साफ कर, ये साफ कर, ये चकली उतार, ये चूड़ा बना, है ना, वो नहीं करना है. मतलब वो करेंगे, उसको हम डिनाई नहीं कर रहे. वी आर होम मेकर्स, बट उतना ही नहीं करना है. इसके लिए मुझे कुछ करना है, और ये समझाना पड़ेगा आपको वहां पे थोड़ा सा टिप्स एंड टेक्निक्स That is why लेके. I think that if I get something to do, and maybe if I'm doing good, and maybe they're seeing that I'm doing good, they might हाँ, understand, तो and वे then ये maybe they चूड़ा can move चकली forward. साइड में हो जाएगा, and then Yeah, they'll thoda maybe hoga. Because I I know. mean, they are not totally like, it's not like they won't support or something, but then I don't think, like, they've not seen people doing it so far. And plus, in smaller cities, it's usually like the people will be like, मतलब घर में काम करो, and then रात को, like, you can go for parties or you can do anything that you want, but working. I know that pain area. मुझे पता है ये. तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ, सोशल मीडिया है अपने पास. नेहा, why are you waiting for? There is Instagram, there is your YouTube, there is your Facebook. रील्स बनाओ 1-1 मिनट के, है ना, 1-1 मिनट के रील्स बनाओ आप, और उसमें डाल दो, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आईडीटी, अबाउट एनीथिंग. बनाओ, मार्केट क्रिएट करो. जब तक आप बड़े हो जाओगे, नाम बड़ा हो जाएगा, तो आ जाएगा. एक तो इन्फ्लुएंसर बन जाओगे. करना पड़ेगा, थोड़ा क्रिएटिव सोचना पड़ेगा इन सब चीजों Is में. there anything else other than edtech? Like, is there anything in data analytics or anything of that sort that I can? There are such kind of work which are being happening, like data. You do this work and then I'll get this thing. तो ये work है, but वो authentic sources से आते हैं क्या, वो मुझे थोड़ा सा सवाल है. Data entry jobs, but हाँ, डेटा एंट्री जॉब. हाँ, मतलब ऐसे ही no, not नो, data आई entry नो, jobs. डेटा एनालिसिस ही आप बोल रहे हो कि ये आप हम देंगे, इसका एनालिसिस हमको करके दो. तो वंदना जी, मुझे ये थोड़ा ना फिशी लगता है मार्केट में, कि ये जब आता है ना ऐसा काम, तो ये ट्रस्टेड सोर्सेस कहाँ से लाए? ये मतलब कौन है कि आपके कनेक्ट में कि जो ये डेटा Big Fours एनालिसिस करने also चाहिए? do have Big Fours also, like, they also want people who can research on the data or who can organize the data. But the only problem is that they want people in the office. So that is the only place where I'm having the problem. Challenge for us. Yeah. That's the challenge for us. Okay. Anyways, thank you. No problem, Neha. वंदना जी, आप अगर पता है तो बताना ना, प्लीज. Can I share? Yes, please. Yes. Yeah, there is one Crossword is one organization which provides the remote jobs. Okay. And they also actually tried very well in dollars. Okay. Have you tried it?
Yeah, they are having the online assessment test on their website. Okay. So if you crack that, then only they will further go for the enrollment What process. kind of jobs do they exactly give? I think so. It's all related to the accounting. You must having the knowledge of accounting standards. So this kind of job. Okay, can you just come And they again? provide a very Crossword, right? well compensation. You can say in dollars they are paying like more than 20 lakhs, 20 lakhs, 25 lakhs in rupees. We can say. Gitanjali, do you mind write it down for everyone to watch it? Huh? Yeah, ma'am, you can find it on LinkedIn, like Crossover. They have triology and all. They have remote working. Yeah, remote. And yeah, and they provide all basic, right from bookkeeping to finance controller jobs are available. Their basic accounting. So whenever you take the test, because I took the test and I made a mistake. I was with my younger son, and I took the test at that time only. So because of that, I just I just lost by just they require it. The required percentage is right about 70 to 80%. You should get it correct. So I got 70%, and that is why I was not able to connect to that remote. Attempt it, Meenakshi ji. Sorry? Reattempt? Yeah, there is one more problem. That's why I told that whenever you take the test, you take it properly, because if you take it once, you cannot take it for 6 months. Oh, okay. Whenever you take it, so take it properly. And they're basically also they test your English knowledge. So it for US job, that what do you say, the US this English knowledge is more preferred there only, the terminologies which they use over there. It's kind of an aptitude and English test. Yeah. It's relating to and it is quite accounts. fast also. Yeah. I see. Yes, it is time based. Okay. Yeah, you can just find Sayali it ma'am, on with your LinkedIn. You can just check for crossover Yeah, on on LinkedIn. LinkedIn it is there. And remote jobs. Remote jobs you can check. You'll get Thank it. you, Gitanjali, Meenakshi, Sayali ma'am. Yeah. Remote job is different and crossover is different. See? Remote jobs, I mean crossover is For remote jobs from crossover they give it, and I think the company name is some triology or something like that is there. They're having a lot of opportunities in this remote working. Right from bookkeeping, the basic pay starts from 30,000 US dollars, and it goes up to 1 lakh to 2 lakh US dollars. So bidding is involved? Sorry? Bidding is involved? Sorry, No, not bidding. It is actually you have to pass that assessment test as on their website, and after that only you will get to know further, because the first hurdle is to pass that first assessment test. I was not able to pass that. So Even I have also tried that. About that. Yeah, yes. I think they I have shared interviews later than that. Yeah, Meenakshi and Gitanjali, the link which I shared, is that the one that you're talking about? Crossover? Yeah, Just, yeah. Okay. Yes, so we can move to the next question. Indeed, it is so great that everybody is now discussing. It makes real sense, you know. Each one has some information which can be really, really helpful to the other member in the forum, you know. Thanks, Meenakshi. Yeah, so definitely that's how we said it's interactive. It's give and take. Not I'm only going to speak. Natali, you wanted to ask something? Thank you, ma'am. I think she's frozen. She's lost the connection. Now she's back. Hi, can you hear me? Yes, I can. Yeah, hi. Sorry, I thought I was talking when no one was talking, but there seems to be some kind of a lag. So I had a question, but before that, can I just add to the whole crossover discussion? Because just last week I finished all the tests, and I read a lot of reviews about
cross over on Quora as well. So I don't want to discourage anyone from trying them out, but I just want to give them more information on like whatever information I've got. So I read that they do, so the pros, I'm going to talk about both pros and cons because that's what I read. Pros are obviously they pay a lot when it comes to us because they pay in dollars. And for us, that's a lot of money because they pay like 60,000 a year, or at the rate of 60,000 a year, they pay you on hourly basis. So 60,000 or 40,000. So that's a lot of money if you look at it in annual terms. So that way, that's one of the pros. Also, I think the work and if the team that you get assigned to is good, it seems like an okay job. In terms of cons, I've read that they track you a lot. Like they take screenshots of your computer every 10 minutes. They make you download a software before you start working for them. And they take screenshots of your screen every 10 minutes or something. And if you don't work those 8 hours in a day, they penalize you for whatever, that you didn't work. So they cut your pay or something like that. And also that it's like it's a contract basis job. So you don't really get sick leave or casual leave. You have to obviously speak with your manager, take leave without pay if he allows or she allows. But there is no like formal HR and you get whatever 10 days of casual leave and 20 days of vacation or whatever. You don't have those facilities. So just want to put this out there for everyone who's trying that out. And also to add into this, they get into a lot of legal complications, that you misuse our data, so there are nasty people who want to do that, and they'll take that entire work, and there is a possibility that they won't pay you at all like that. Plus they'll put you into such kind of legal hassles that you misuse, you did not you were not vigilant enough, or your IT was like this or like that. So that was the incidents which I have heard about. Thanks, Natali, to bring it up here. But yes, there are, and that's how I said, is it a trustworthy company? Is it trusted partner? Have anybody worked on it like that? You can try like a temporary thing, but don't look for it as a long term. Is what I thought, and that's why I did it anyway. I've reached the last stage, and they're supposed to have an interview this thing with me. So I've not been. They've not yet communicated my hiring manager or anything of the interview dates. But I was just like shooting in the dark. So I was just checking it out to see how it goes ahead. And right. So Crossover is like a medium company. They have clients for whom you work. So like I think Meenakshi or someone mentioned, Trilogy is one of their clients. They also have clients like Aurea Software and a few other clients that I saw. So all of these companies post their requirements of finance roles, and then Crossover kind of gives them those people from this pool of people that they interview and, whatever, on board. That's what I understood how it kind of works. Okay, so I had a question in terms of, I just want to, I'll just give you some background about me and then you can probably guide me. So I worked for 6.5 years at Accenture. I did a lot of different roles when I was there in the corporate finance, and it was all very good. I took a break because I realized during that time that I like fraud investigation and detection, that line of work. So I took a break to actually get certified as a fraud examiner. So there's a degree called CFE from Austin, Texas. There's an institute called ACFE. And then I wanted to switch roles completely. So I tried to start looking for work in that. I was also selected to work with SFIO in Delhi, but because of some family issues, I couldn't relocate to Delhi. I'm based in Pune. So all that happened, and then the pandemic happened. So, and then I had a baby. So, now it's been 2 years since I have left my job and I'm trying to get back to work. And I realized that I can't do a full-time job. My kid is just 1 year old. I have to stay at home and, watch her at least. So I need flexible timings and all of that.
And so again, like everyone wants part-time work, assignment-based work, that's something I'm looking out for. And I also realized sooner that this is going to continue for at least next 3-4 years of my life. It's not like a short-term 1-year thing. And I don't know, how there's like you said, demand and supply. There's a lot of supply of people who want to do this kind of work. I don't know how much demand there is for it. So one of the things I thought of was to start something of my own. But I know it's like extremely difficult, considering I have no experience in practicing as a chartered accountant. So I just want to know where to start. I obviously can't start doing forensic audits and fraud investigation assignments because nobody is going to give me those kind of assignments without experience. So I wanted to know, where can I start? How do I start? One of the things you said, networking, yes, that's definitely one of the big things. But in terms of work, like, what kind of work should I try to do? Like IT returns, GST, VAT, like what can I possibly do? अब वंदना जी ने कैमरा ऑन कर लिया, तो वंदना जी बोल लीजिए, फिर मैं बताती हूँ. I believe. See, इसीलिए मैंने देखो ना लिंक्डइन का एक मेरा पोस्ट था, मुझे इट रिमाइंडेड मी ऑफ माय दिस पोस्ट, नो, एक रील बनाया था, जैसे इन्होंने बोला ना, वो थिंग है कि आपको लोगों के पास इंफॉर्मेशन शेयर करनी है. तो मैंने एक इंस्टा पे एक रील डाला था, वो भी मैं ढूंढ रही थी एक्चुअली लिंक. मैंने उसमें 4 टिप दी थी. फर्स्ट ऑफ ऑल, टेल टू योर रिलेटिव्स दैट यू आर बैक इनटू द बिजनेस, यू नो, देयर विल बी योर फर्स्ट कनेक्ट, then your friends, then your mentor, where you did your articleship. Try to have a good relation with everyone. And then the already Sayali added to that, I also gave the same tip. Website is should be there. Your appearance on the LinkedIn, Social media, yeah. Social media, wherever you can put your articles, tips, tricks, कुछ भी. At least people should be getting feel of it. तो कुछ भी काम कराना है तो उसको नताली याद आनी चाहिए. अरे ये करना है तो सयाली याद आनी चाहिए. मीन्स एक अंदर दिमाग में घूमते रहना चाहिए. तो हैमर करना पड़ता है लोगों के दिमाग में, तब जाके उनको याद रहता है कि यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क. सो लेट्स कम इनटू द नेटवर्क, स्टार्ट पोस्टिंग ईच अदर. इसीलिए हम लोग देखो, पिंकी आ गई है मेरी आरसीएम, मेरी खास फ्रेंड. मैंने बोला पिंकी यू आर अटमोस्ट रिक्वायर्ड, सो प्लीज ज्वाइन विद अस. क्योंकि वो ना अभी कल ही हम लोग पिकनिक, जेबी नगर की पिकनिक में गए, 110 लोगों को उन्होंने मैनेज किया. क्या होता है कि मेन इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है कि आपके अंदर वो एक प्योर हार्ट होना चाहिए. जो भी काम करना है 100% डेडिकेशन से करना है. और टाइम एंड अगेन Sayali and I, what I was telling is that be passionate about whatever you want to do. She said, and best today Pinky, मैं 2 मिनट और शेयर करूंगी जितनी लेडीज खड़ी है ना यहाँ पे. The best dialogue Sayali said is what, whether you are well to do or not, whether whatever your state of this thing, मुझे काम करना है वो मेरी चॉइस होनी चाहिए, मेरा डिसीजन होना चाहिए. I want to keep myself occupied. The best dialogue of the day today. तो मैं तो देखो, मैंने तो शादी नहीं की, मेरे को तो टेंशन ही नहीं है, आगे पीछे का ज्यादा कोई झमेला ही नहीं, कोई झमेला नहीं. But still, because we come across the females and all the problems, and मैं टाइम एंड अगेन क्या बोला, ये जो फोरम है ना वो मेल के लिए होना चाहिए. फीमेल को तो सबको मालूम है क्या प्रॉब्लम है. मेल जब तक जानेंगे नहीं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो आपको सोल्यूशन नहीं दे सकते. उन्हें पता ही नहीं है कि व्हाट यू आर पासिंग थ्रू. जब तक आप डॉक्टर के पास भी जाओगे तो आपको क्या प्रॉब्लम हो डिस्कस करना पड़ता है. सिमिलरली काउंटर पार्ट के साथ डिस्कस करना पड़ेगा. वो बात और है कि उनके दिमाग में जो 20 साल सदियों पुरानी चीजें घुसी हुई है, उसको भूसे को निकालना डिफिकल्ट है. बट पिंकी हैज अचीव्ड इट. पिंकी, ओवर टू यू. Sorry for late joining. Actually, I have to leave for out of Mumbai, so I was about to complete my office work. So sorry, but thank you, Vandana, to call me. She called me and said, "Pinky, थोड़ा time है तो आजा, बहुत interesting topic चल रहा है, and there is the need of you, there is requirement of you. So please join this." जितने लोग join किए हैं, I think they all know me. Since 1st March we are meeting. शायद आज ही होगा जो मैंने ज्वाइन नहीं किया होगा, अदरवाइज बाकी सब दिन मैंने ज्वाइन किया. इवन कल पिकनिक से भी मैंने ज्वाइन किया था साइड में जाके. तो किस टॉपिक पे चल रही थी बात, जरा मैं पूछ सकती हूँ तो मैं इस पे कुछ गाइड कर सकती हूँ या बता सकती हूँ. तो Basically, they want from the WRC side how they are going to give us the opportunity to work
there are females from Bhavnagar, Ahmedabad. There are some females, they want to come back into the profession after the short break. So what are the steps taken by the WRC as well as ICI? If you can help them out? For this I want to say कि आप देखो, हमने जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया, कैंपस ड्राइव फॉर वीमेन, how many women are attending from 1st March? You also can see that only 26 to 28 to 30, maximum 30 women are approaching. और जबकि हमने 10-15 लोगों का हमारा पूरा फुल एफर्ट लग रहा है इसमें, और कितनी women ने बेनिफिट लिया इसका. Even they are not keen to fill the Google form. गूगल फॉर्म हमने इतने सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं कि कल जो कैंपस प्लेसमेंट होने वाला है उसके लिए हमने गूगल फॉर्म सर्कुलेट किए हैं. दे आर नॉट फिलिंग द गूगल फॉर्म आल्सो. we had received only 35 entries in Google form. So what I can tell about this ना पिंकी जी, शायद अवेयरनेस नहीं है. अवेयरनेस होने से भी मुझे उसका बेनिफिट हो सकता है, ये भरोसा नहीं है. WRC इवेंट है ना, हाँ ठीक है, इट विल बी प्रोलॉन्ग्ड एंड बोरिंग एंड नथिंग टू गेट आउट ऑफ इट, व्हिच इज नॉट. I've been into many speaker sessions. Actually, my partner, I had chosen from that campus, WRC campus placement last to last year. So ऐसी बात नहीं है कि कैंपस प्लेसमेंट में अच्छे नहीं मिलते. इवन my husband was in IDBI and from campus placement only. तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए. Right. You should have that confidence कि you should crack the interview and you can be selected. सामने वाले को सोचने में पड़ना आना चाहिए कि भाई मैं 10 की 10 लेडीज इतनी ज्यादा डिजर्व कर सकती है और मैं उसमें से किसको चूज करूं. राइट. अच्छा, दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगी कि WIRC फिर भी अपना CA इंस्टीट्यूट फिर भी फीमेल के लिए सोचता है. देयर इज अ विमेन विंग. देयर इज नो एनी विमेन विंग या इंस्टीट्यूट इन MBA, इन डॉक्टर, इन इंजीनियर. वी आर प्रोफेशनल. कोई दूसरे प्रोफेशन में, किसी भी दूसरे प्रोफेशन के इंस्टीट्यूट फीमेल के लिए अलग से कुछ भी नहीं करते. Because we have friend, engineer friend, we have doctor friend, we have MBA friend. कितने लोगों के आपके बताइए कि उनके इंस्टीट्यूट उनको फीमेल को हेल्प करते हैं. और आप लोग सामने आइए, आप हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं एट WIRC लेवल टू हेल्प देम आउट. देखिए, मैं इस चीज को मानती हूँ कि बोलते हैं ना, खाना भी जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, लेकिन यदि थाली परोस के रखी हुई है ना तो घास अपने हाथ से खाना पड़ता है. घास दूसरा नहीं देगा कोई हाथ में देके आपको. तो मैं यही बोलूंगी कि फिर भी हम लोग एज ए फीमेल, हम लोग यदि WIRC में आए हैं, हम चाहते हैं. इवन आप लोगों को पता नहीं होगा, JB नगर स्टडी सर्कल में वी आर द फर्स्ट स्टडी सर्कल हु क्रिएटेड विमेन विंग. वो बात अलग है कि 4-5 साल बाद में इंस्टीट्यूट से ही मना कर दिया गया कि स्टडी सर्कल फीमेल जेंडर बायस प्रोग्राम नहीं कर सकते. दैट इज द डिफरेंट इश्यू. बट अगेन वी ऑल more than 350 women are combined in JB नगर फीमेल ग्रुप. हम लोग अलग से कोई मीटिंग नहीं कर रहे, बट फिर भी हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इतने एक्टिव ग्रुप है. आप वंदना से या जो भी हमारे उसमें JB नगर के ग्रुप में होंगे, एक भी चिट चैट मैसेज नहीं होते, एक भी गुड मॉर्निंग बर्थडे विशेष नहीं होती. ओनली प्रोफेशनल मैसेजेज एंड प्रोफेशनल आंसर. मतलब इतना लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो कहीं भी रात को 11 बजे भी अटकते हैं ड्यू डेट के टाइम पे. और बाकी टाइम पे मैंने फीमेल के लिए स्पेशली उसमें मना किया हुआ है कि 8:30 बजे के बाद में कोई प्रोफेशनल पोस्टिंग नहीं होगी. बट ड्यू डेट यदि पास में है, आपका ड्यू डेट के में कोई वजह से कुछ अटक रहे हो, रात के 11:30 पौने 12 भी आप क्वेश्चन डालते हो, क्वेरी, तुरंत उसका इमीडिएट फीमेल जवाब देती है. शुरू में ऐसा हुआ था कि खाली हम 4-5 फीमेल ही आंसर करते थे. नाउ इज द सिचुएशन कि मैं
देख नहीं पाती और उनके जवाब मिल जाते उन्हें। राइट, लोगों को कॉन्फिडेंस आने लगा है, तो कम से कम भी 20 to 25 फीमेल को ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया, दे आर रिप्लाइंग इमीडिएटली। करेक्ट करेक्ट। एंड दैट वाज आवर मोटो। नहीं, डेफिनेटली एम्पावरमेंट ही करना है, अवेयरनेस बढ़ाना है। पिंकी जी है अपने साथ, जैसे उन्होंने बोला एक व्हाट्सएप ग्रुप है। अभी पहले स्टार्टिंग में भी वी स्पोक अबाउट इट दैट यू नो वी शुड हैव द स्ट्रांग नेटवर्किंग स्किल्स। नेटवर्किंग अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप पिंकी जी से भी पूछ सकते हो, यार दिस इज द प्रॉब्लम, वेयर कैन आई डू, तो वो नेविगेट करेंगे ना। भले उनको पता है नहीं पता है, एटलीस्ट उनको ये तो पता है आपका काम कौन कर सकता है। तो यही हम जानना चाहते थे पिंकी जी आपसे कि ऐसे कौन से प्लेसमेंट प्रोग्राम्स है, या जैसे आपने बताया कि ओनली 30 पार्टिसिपेंट्स हैव एनरोल्ड फॉर दोज एग्जाम्स। तो ये जो फोरम है ये और भी अवेयरनेस प्रोग्राम लाए जो लोगों तक पहुंचे, इज माय यू नो दिली ख्वाहिश यही रहेगी कि जितना ज्यादा हम बढ़ेंगे और साथ में फिर ग्रोथ होगा, लाइक दैट। एंड वन थिंग आई वांट टू शेयर कि मुझे लोग समझते हैं कि मैं सब एरिया में प्रैक्टिस करती हूँ। Why? Because I am answering the question, but I am not doing practice in all the area. लेकिन मैं अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए जब भी कोई क्वेश्चन पुट करता है ना, यदि मेरे पास टाइम है उस समय, आई एम सर्चिंग आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। और यदि मैं नहीं कर पा रही तो मुझे पता है कि उस फील्ड में कौन मेरी फ्रेंड काम कर रही है। I'm messaging, forwarding the message to them and I'm asking कि भाई इसका solution क्या है, उसको हम समझते हैं and then I am putting the answer। तो उससे क्या मेरी नॉलेज भी बढ़ रही है, भले ही मैं उसका काम नहीं कर रही हूँ, उस फील्ड में मैं काम नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी मुझे कहीं ना कहीं तो वो नॉलेज मिल रही है ना। एंड नॉलेज गेन करना ऑलवेज बेटर। यस डेफिनेटली। तो जो भी अभी आप सबैटिकल लीव पे हो या आपके पास जॉब नहीं है या आप घर पे हो, मैं आप लोगों को यही बोलूंगी जिस भी ग्रुप में आप ज्वाइन होकर रखे हो, कोई भी क्वेश्चन आता है, अदरवाइज क्या होता है ना, हम यदि ऐसे बोले कि आप पढ़ो तो बोरिंग होता है यार, कितना पढ़े, पढ़ने तो एंडलेस है, और एवरी डे कुछ ना कुछ नया चेंजेस आता रहता है, कितना पढ़ोगे। जब तक आप उसको प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज से, प्रैक्टिकल सिचुएशन से रिलेट नहीं करते हो, तब तक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है, सिंपल सी बात है। तो जैसे ही आपको यदि कोई प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन कोई भी ग्रुप में मिलता है, आप आंसर मत करो, बट यू शुड सर्च फॉर आंसर एंड देन मैच योर आंसर विद द आंसर गिवन बाय एनी अदर पर्सन, कि आपने जो सर्च किया वो आंसर ठीक था कि नहीं था। तो उससे आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि नहीं, ये मैंने भी यही आंसर सोचा था, उसने भी यही आंसर दिया है। वाओ स्वीटी, वेरी क्यूट। सो देखिए अभी वो भी काम कर रहे हैं, वो भी एज ए फैकल्टी सी केम, सो आई नो व्हेन यू आर ए फैकल्टी हाउ मच प्रिपरेशन यू रिक्वायर्ड, because I am also faculty for several topics, so I know how Pinky, I have posted the घर संभाले फिर भी वो कर रहे हैं। Pinky, एक मिनट ना, सॉरी, I posted the link for the Google form also, और एक प्रोफेशनल ग्रुप में 5 वैकेंसी है, मतलब 256 लोग ही मिल सकते हैं, 250 लोग ऑलरेडी है, जिसको ज्वाइन करना है कर ले। वो प्रोफेशनल ग्रुप का चैट, वो व्हाट्सएप का वो लिंक भेजा है मैंने, अभी उसमें 250 मेंबर ऑलरेडी है। और मैंने वो कौन से वाले ग्रुप का भेजा है तूने? मेरा वाला जो है ना, उसमें 5 अच्छा तेरे वाले का भेजा। मैं वही बोली क्योंकि जेबी नगर वाले में तो हमने एक सिस्टम किया हुआ था कि जो हमारे स्टडी सर्कल का मेंबर है हम उसी को ही उसमें ऐड करते थे। फोरम है ना, जनरल फोरम है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि जनरल फोरम में नहीं, उन लोगों ने कोई डालते हैं अपूल, उन लोगों ने चैट में डाला है ना कि उन लोगों को ग्रुप में मेंबर बनना है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि मैं तो क्या बोलता हूँ, ऐसे वुमन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम होते रहते हैं, धीरे धीरे जिनको नेटवर्क में जाना है, जैसे बोला ना, हाथ पांव खुद को मारना पड़ेगा, ढूंढोगे तो सब कुछ मिलता है। Sorry, interrupt. Sorry. हर्षदा बोल, Please continue. नहीं ठीक है, तो डाल दिया वो पिंकी को बताने के लिए कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि गूगल का टाइम है, ये टेक्नोलॉजी का टाइम है, हमने चैट में डाल दिया है, गूगल फॉर्म भी मैंने डाला है, बट नाउ माय क्वेरी इज दैट आप लोगों ने जो मेल 21 फरवरी को पूरे हम लोग तो 1 लाख लोगों को बोलते, जब भी मेल जाता है ना इंस्टीट्यूट से, तो हम थोड़ी खाली फीमेल पार्टिसिपेंट्स को भेज रहे हैं, वहां से पूरे 1 लाख लोगों को जाता है,
Now males should have also informed to their counterpart that there is a placement going on, and then females should have opened that mail and fill the form, and that is why Pinky is bogged up. क्या मैं इतना प्रोग्राम कर रहा हूँ, उसके बाद इतने घंटे लोग दे रहे हैं, and the female are careless, 35 अंदर से गुस्सा ही आएगा ना कि हम क्यों कर रहे हैं ये सब तामझाम। अभी मैं किसी फर्म को या अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को या अच्छी कॉर्पोरेट को मैं कॉल करूं कैंपस के लिए, what I will say कि I have only 35 form in my hand. तो ये क्या होता है ना, वाइस वर्सा होता है। अभी आप लोग इसलिए नहीं आते कि अच्छे कॉर्पोरेट या फर्म नहीं आ रहे, अच्छे कॉर्पोरेट या फर्म इसलिए नहीं आते कि उनको कि उनको लोग नहीं मिल रहे, उनको कम वो मिल रहे हैं। अभी वो 35 में से उनके हिसाब से वो कितने लोगों को सेलेक्ट कर पाएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट 100% agree. अच्छा, गूगल फॉर्म भरने के लिए क्या 500 रुपया भरना जरूरी है? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। तो गूगल फॉर्म तो ना, तो गूगल, क्योंकि मैंने जो भेजा है ना वो तो सीधा WRC पे लेके जाता है और 500 रुपया भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। नहीं, आई एम सेंडिंग जस्ट a second, I am giving the group that thing. उसके गूगल फॉर्म के लिए कोई भी वो नहीं है। आप भेजिए तो मैं अभी उसको ब्रॉडकास्ट करा देता हूँ मेरे सर्कल में भी। एक्चुअली 2 मेल आए थे गूगल फॉर्म्स के लिए इंस्टीट्यूट से। आए हैं, वो भी हमने भेजे हैं। लेकिन ढूंढना पड़ेगा ना। मेल किए हैं, मेल किए हुए गूगल फॉर्म भी। Ma'am, we received the mail and we have already, means I have already. मैंने भी फिल कर दिया। मैं वही बता रही, मैंने एक दो आप लोगों की बात नहीं बता रही, मैं बता रही हूँ, जनरल बता रही हूँ कि हम लोगों ने 1 लाख लोगों को फॉर्म भेजे हैं, उसमें से सिर्फ 35 गूगल फॉर्म हमें मिले करके। आप सोचो कोई भी दूसरे के लिए कितनी मेहनत कर सकता है। आप लोग खुद भी देख रहे हो, फर्स्ट से मैं हम लोग वही बात कर रहे थे कि इतने आप लोगों ने भी जो अटेंड किया है, यू ऑलरेडी सीन दैट हाउ द टैलेंटेड स्पीकर्स वेयर देयर, एंड कितने बड़ी बड़ी पोस्ट के हम स्पीकर लेके आ रहे हैं। CFO organization, CEO of the big organization they are the speaker, moderator is the partner of Deloitte, and attendance is only 26-28. And then all the person are asking कि WRC क्या कर रहा है फीमेल के लिए। हम उन लोगों को घर से जा के निकाल के नहीं लेके आ सकते, खींच के कि चलो चलो। अभी तो बच्चे भी नहीं सुनते, कहीं जाने के लिए जिद करेंगे तो बच्चे भी मना कर देते कि नहीं, हमारी जहाँ मर्जी होगी हम जाएंगे। तो वी शुड empower ourselves, दूसरों को भी हमें वो करना है कि आप, और सबसे मेन बात मैं सबको ये बोलूंगी, नॉलेज बढ़ाइए। घर में बैठे हैं या हम जॉब ढूंढ रहे हैं ना, तो ये सोच के नहीं बैठना है, क्योंकि जितने दिन पास ऑन हो रहे हैं ना, आप उतने पीछे जा रहे हो। डेली बेसिस पे इतनी ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, हर दिन नोटिफिकेशन, सर्कुलर, सो यू शुड बी अप टू डेट। एटलीस्ट हमें ये तो तसल्ली रहती है ना कि हमें ये चीज आता है। खुद का सेटिस्फेक्शन भी बहुत मायने रखता है इसमें। और एक आपको, जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हो ना, आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल रहता है कि नो, दिस टॉपिक आई नो। कोई भी एक भी वर्ड नहीं आता तो मैंने पहली बार सुना है, क्योंकि आप वो अपडेट हो रखे हो। तो सयाली मैडम, आई डोंट वांट टू किल योर टाइम बिकॉज वही मैं वंदना जी को भी बोल रही हूँ, पिंकी जी, कि it's open forum. I am just designated as a speaker, but we all are speakers. We all are speaking to each other. We all are sharing, exchanging our viewpoints and pointers and pluses and minuses. So no, don't worry about it. Absolutely don't worry about it. So, and sorry if I tell me Devti. Unmute yourself. Yeah. Good afternoon, madam. Good. Hello. Afternoon. Yeah, good afternoon. Yeah. Actually, I'm the practicing chartered accountant, but I started practice in 2020, in July 2020, when the COVID just started. So I not get exposure to meet some CAs or so
I want to join the JP Nagar circle study group. So Yes, what most procedure welcome, to most join welcome. and Yeah, there is a site and I am jbnagarca.org. Form is there. You can come and you can. But I will suggest you to fill the form after 1st April, because our membership is from April to March. okay. So better to fill on after 1st April. I am from RA Colony, Mumbai, Goregaon West. So is it okay to join JP Nagar study circle? We have member from Kalyan, Dombivali, Chambur, all the area. पुणे के लिए भी करा दो पिंकी जी. I will come there. Sayali ma'am, I have one question. अभी देखिए मैम, अभी क्या है ना मैम, सायली मैडम, जब हम यहाँ सिर्फ मेरा no, today you are faculty, so I should give respect to you. When we will meet in personal or in any other forum, I can say you Sayali. So but when I was in Mumbai, at that time I was thinking only for JB Nagar, when I was only in Andheri area. But now if I am in WIC, I have to think full Western region. Okay. Definitely. So Sayali, I will wish ki Pune maybe we will from with the help of Ruta, with the help of Rekha, we will do something for female CA in Pune also. There are so many powered women in Pune also. तो पुणे में भी कुछ ना कुछ वैसा करेंगे कि सब आपस में. और देखिए अभी तो जो लॉकडाउन की वजह से पूरा सारा इंडिया एक ही हो गया, पूरा ग्लोबल एक हो गया है. सो देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ लोकेशन. Correct. We correct. can meet in. Yes, Revati, you were asking something. मेरा कहना. Can I ask? हाँ बोलिए. So ma'am, actually I cleared my CA in 2014. So then after that I'm in industry, but you know something, मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे प्रैक्टिस में जाना ही है. और मेरा बैकग्राउंड तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मेरे यहाँ पर कोई बिजनेस तो करता नहीं है. सो आई एम द फर्स्ट वुमन हु स्टार्टेड प्रैक्टिस माय ओन, टेकिंग माय ओन डिसीजंस. सो अभी मुझे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यू नो मेरा थोड़ा गैप भी आ गया है, यानी इंडस्ट्री में भी मेरा गैप आया था इन 2016 में. फिर 2017 में मुझे छोटी बच्ची डॉटर हुई थी. सो इन 2018 में आई स्टार्टेड अगेन इन इंडस्ट्री, सेम कंपनी में आई हैव जॉइंड, बट फॉर पार्ट टाइम ओनली, बिकॉज दे कॉल्ड मी कि नहीं आप तो आना चाहिए. सो कैन यू हियर मी? Yes, I can. सो अभी मुझे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब मैं कहीं ये करती हूँ, खुद को इंट्रोड्यूस करती हूँ, तो यू नो सम गैप्स दिखते हैं मेरे इसमें कि इंडस्ट्री टू प्रैक्टिस टू यू नो पार्ट टाइम जॉब. अभी फिर से मैं प्रैक्टिस में आ गई हूँ. सो हाउ टू टैकल दिस? you know they ask me ki why you are changing such a shift. You are now planning to go from, back to industry again? No, I don't want to. I want to in practice only, but you know due to some यानी थोड़ा सा छोटी बच्ची है, तो मुझे पार्ट टाइम ऐसे प्रैक्टिस में रह करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या असाइनमेंट बेसिस जो रहते हैं, जैसे बैंक ऑडिट्स वगैरह में मैंने अभी एक बैंक का मैंने ऑडिट किया था, बट वो मुझे और थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाना है. सो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं वो गैप्स ना? कि क्या गैप्स क्यों आए हैं, क्योंकि मुझे ऐसे हर बार यू नो पर्सनल रीजन देना, इट्स आई एम नॉट थिंकिंग इट्स गुड. सो before answering your question, can I go back to Natali and answer her question, because I think ये सब बीच में उसका answering रह गया कि forensic audit का that was your question, right, Natali, that how can I go ahead with this forensic audit या फिर ऐसा? I will start practicing on my own, but I know I won't get forensic audit assignments immediately. So how do I start working? What kind of assignments should I try to get at first? Obviously, I'll need to
refresh on certain things, revisit some laws, because I've been out of touch with all of those. Right. So Natali, I have two friends of mine who are working into this kind of setup. One is Transaction Square, because you are Pune, right? And these companies are in Pune. So there is a Transaction Square, and then there is Acumen. Okay, so their founder directors are friends with me. I'll write it here. I'm not sure if I'm allowed to do here, but now that you have this specific query and they are dealing with it in transaction ka spelling ye kar lena Transaction Square, and then it's a typo, it auto this thing, and then there is a Acumen. So they are more into this due diligence, forensic audits. There are questions happening, and then if you are interested, so Pinky ji or maybe अरे कहाँ गए अपने अरे वंदना मैम जी गए शायद, तो ये अपना है हाँ मैं ढूंढ रही हूँ आपको। तो हमारे इंस्टीट्यूट पे फॉरेंसिक ऑडिट के ये रहते हैं एग्जाम्स रहते हैं, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो एज अ टीचर, है ना, फैकल्टी मेंबर करके आप जा सकते हो। तो आपका भी नॉलेज फ्रेश रहेगा, उससे और लोग जुड़ सकते हैं। एक हरि भक्ति करके कंपनी है, राइट, दे आर इनटू ऑल ऑफ दिस चीजों में आप पूछ सकते हो कि कैसे करना है, क्या करना है। आई थिंक वन ऑफ माय फ्रेंड्स अमृता कुलकर्णी फ्रॉम पुणे, सो शी डिड इट हर फॉरेंसिक ऑडिट अभी। तो ऐसे लोगों से पूछ के ही फिर जो एक्चुअली इसमें है, मतलब जैसे मैंने बताया ट्रांजैक्शन स्क्वायर या एक्यूमेन, इनसे फिर आगे लीड लो कि वेयर आई कैन अप्लाई। अरुणा जी, वेयर आई कैन बी अप्लाई फॉर फैकल्टी इन WRC, तो वंदना जी and Pinky ji will be able to tell us where they can apply. Vandana ji. Sarbani Kapoor is taking care of faculty right now. Sarbani Kapoor is there. I will share the email address where they can send their resume. And Pinky, hurry back, Pinky. Huh. So they want to work as a faculty. Now see, Sarbani takes care of WRC. So that's a main in Mumbai. Now branches will be recruiting faculty branch wise. That's what I understand. So each branch, one can just go to WRC site, and WRC there is a branch wise link is available. So each branch contact details are available there. So whichever part of WRC you are, say Bhavnagar, so she can go to Bhavnagar branch and discuss. That's what Pinky will like to add. They want to be a faculty for what? Faculty for webinar, PMCAs, ITT or webinar, either or. No, system is different for all other things. हाँ, तो जरा throw the light. क्योंकि वेबिनार के लिए फैकल्टी आप लोग अपने जो भी ब्रांच लेवल है या आपके एरिया लेवल पे जो भी इंस्टीट्यूट की ऑफिस है, यू कैन अप्लाई देयर, और या फिर आपके जो भी बोल है ना, स्टार्ट स्पीकिंग इन अ स्मॉल ग्रुप. Okay, if when you will start speaking in a small group, then you will get the confidence, so you can do the program on bigger area things. Okay, तो first आप लोग small area से start कीजिए. जैसे हमने start किया था वुमेन विंग में, जब JB नगर में हम लोगों का 15-20 लोगों का ही ग्रुप, पहले 15-20 लेडीज आते थे, उसमें हम लोगों ने रखा था faculty should be a speaker only, female only, faculty should be a female only, managed by female, attendee or participant is also female, no any male member allowed. Even हमारे कन्वेनर मेल मेंबर थे, तो उनको भी हम अलाउ नहीं करते थे, तो कि नहीं कि सिर्फ फीमेल रहेंगे तो they will feel more comfortable. हमारा शुरू की फर्स्ट मीटिंग में 20 to 25 फीमेल्स आए थे, सबको हमने पर्सनली कॉल किया था उसके बाद, एंड जब हमने बंद की ना, उस दिन हमारे यहाँ पर अटेंडेंस 95 की थी, फिजिकल अटेंडेंस 95 फीमेल्स आए थे, एंड एवरी मंथ वन न्यू फीमेल फैकल्टी इंट्रोड्यूस्ड. दे हैड नेवर गिव एनी लेक्चर इन एनी फोरम, और उनको हम खड़ा करते थे कि नहीं तेरे को इस टॉपिक पे बोलना ही है. एंड ऐसा नहीं था कि वो फैकल्टी उसको खड़ा कर दिए तो हम साइड में बैठ गए, नहीं, उसको ये था कि मैं कहीं भी अटकूंगी, ये ग्रुप मेरे को हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा.
तो जहां हमें समझ में आता था कि वो कहीं भी कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जिसके लिए वो प्रिपेयर नहीं है, हम लोग तुरंत जो कोऑर्डिनेटर थे या हमारा जो ग्रुप था ना, हम तुरंत उस सिचुएशन को उस वैसे डाइवर्ट करते थे। तो उसमें कई सारे WRC के लिए फैकल्टी में जाने लग गए। अभी WRC के लोग हमसे मांगते थे कि फीमेल फैकल्टी है तो मैडम दीदी आपके यहाँ से अच्छे जनरेट होके आए। तो दिस इज लाइक अ ग्रूमिंग। तो सबसे पहले आप लोग अपने बेस लेवल पे जहां पर भी हो ना, वहां के ही कोई एक छोटे इंस्टीट्यूट के उसमें ग्रुप में जाइए। उसके बाद में आपको चाहिए, आप अपने जो भी है आप हमें भेजिए, मुझे भेजिए, श्वेता को भेजिए, WRC में भेजिए आपका प्रोफाइल। वी विल टेक यू एज ए लेक्चरर इन एनी प्रोग्राम ऑफ योर इंटरेस्ट। हाँ, GMCS और ITT के लिए प्रॉपर उनका आपकी उस सब्जेक्ट में नॉलेज होनी चाहिए। एंड देयर आर faculty program also in WIRC, faculty development program in WIRC, और उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, क्योंकि GMCS और ITT you are teaching to the students and on that they are grooming themselves. तो वो एक webinar is on choice, but GMCS and ITT is not on choice, it's a curriculum. So there should be yeah, formal training also should be there. कोई भी ऐसे को खड़ा, कोई भी आदमी को ऐसे खड़ा नहीं कर सकते कि तुम GMCS की ट्रेनिंग दे दो या ITT की ट्रेनिंग दे दो। देयर शुड बी सम फॉर्मल ट्रेनिंग कि क्या पढ़ाना है, सब उसका सिलेबस है पूरा, उस सिलेबस के हिसाब से क्या बताना है। सो वो दोनों चीज डिफरेंट है। अब वेबिनार के लिए आप लोग, यदि आपको वेबिनार में बोलना है, यू सेंड मी योर प्रोफाइल, सो देन आई विल कंसीडर यू इन आवर नेक्स्ट वेबिनार, बिकॉज पूरे साल हमें करने ही है, फीमेल्स के लिए भी करने हैं। और हम ऐसे ही स्टडी ग्रुप टाइप के हम ग्रुप डिस्कशन वाले रख सकते हैं, जैसे सायली मैडम ने उसको ग्रुप डिस्कशन में कन्वर्ट किया है। सो ऑल द so all female can give their support and suggestions and opinion, all these things. We can plan for that, like a faculty grooming program we can start. Okay, right. So I was part of that FDP. Yes. Sorry, who was that? And ITT courses, only experienced people will be preferred by the institute, correct? No? Yes, I can tell you about GMCS and OP because I was a faculty member and I've done this FDP program also. I was a speaker as a FDP program. So all they want is your resume, as in a profile. You got to send it to Mumbai office, where I'm not sure who takes care after that. And they get the approval that, okay, fine, your resume or your profile or your CV suits the requirements of soft skills. You have enough of that knowledge that you can impart, right? And then you get that affirmation from WRC or maybe Mumbai office to your branch level, and then branch level in turn get in touch with you, and then you got to be in touch with them, those who are scheduling the GMCS batches or OP batches. So go and meet them first, that you know what, I am interested for this, and register your number, name, and then there is a portal where you have to register yourself as a faculty member and in which area you think that you are good at, probably soft skills, CV, interview tips and techniques, group discussion, any other thing, right? So there are what do you say, there are sections where you have to rate yourself. You have to submit it to the branch level then approve it, and then only you will be able to kind of get into the formal training program with them. This is even for the faculty development programs also? Faculty development program is like we have a database with all such GMCS, OP thing, right? In order you to be there as a FDP, you must have given some kind of GMCS orientation programs before. And then just last year it happened, they chose WRC level पे अच्छा 4, तो उसमें से मैं एक थी और विदिशा एक थे और ऐसे 4 लोग WRC से आए, फिर CIR से आए, NIR से आया, इससे आया, उससे आया, तो फिर हम शफल हो गए। हम लोग CIRC को दिए, किसी ने SIRC को दिया, किसी ने WRC को दिया, ऐसा, बट हम उसमें थे in that GMCS and OP platform, and that's how there are ratings
Okay, so don't forget that there are ratings. Students will give you rating based on your performances. Okay, so you're also getting judged. So on the basis of ratings plus your feedbacks, your feedback from branches, and that's how they choose you for the FDP program, like development program, to speak in front of train the trainer sessions. Train the trainer. Yes, but for that, what I found, the problem with me probably, like, how can I train someone who is already trained? So you got to be little upper, little exclusive, little outstanding from all of them, because that was my first FDP program that I was into it. और मुझे ये थोड़ा सा चैलेंज लगा रही, ये तो इनको पता ही होगा, ये तो इनको पता ही होगा, ये तो इनको है. तो ये FDP, don't, I mean, if you ask me, don't just thrive yourself for the FDP training immediately. It could be quite overwhelming, even though I was into this training programs forever. But मुझे भी challenges आए, क्योंकि अपने से ज्यादा अपने से सीनियर भी वहां पे आते हैं, and they judge you like, अच्छा तू क्या बात करेगी 15-16 साल की लड़की types, like that. So that's the area. But GMCS, OP, ITT, you can definitely try, Aruna ji. You can definitely have a look. Forensic audit, Natali, you can really get in touch with them and kind of tell them that, okay, I'm available for this, and they pay you well. ऐसा नहीं है, they pay you well. Meanwhile, you are getting it. So there are programs happening, there are industry connects are happening. So get in touch with them, and those 2-3 the companies which are on top of my head. तो इन लोगों से भी एक simple email कीजिए. Hi, I am this, I'm interested in this. Probably you can use my name and tell them that, I've attended her session and she thought that you will help us. तो वैसे करके डाल दो, and you will get going. Network again boils down to one thing, network. And to answer the question, how can I show that gap? First of all, वो gap है ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ आप उसको feel मत कराओ कि रेवती की यार ये बहुत बड़ा क्राइम हो गया, ऐसा नहीं है. इट्स अ जर्नी, लाइफ जर्नी, और हर ये बड़ा पजल है. I'll give you one quote which my director always used to tell me. His name was Kim Hong करके मेरा ये था. तो वो मैं कभी ऐसे स्ट्रेस्ड आउट हो जाती थी, यार मुझे एवीपी नहीं मिला अभी, यार मुझे वीपी कब मिलेगा, like that. So he always used to tell me, Sayali, in the end it's just the job. Just muting yourself. So in the end, it's just the job. In larger scale of picture, आप imagine करो, where do you stand? You stand कहाँ है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, इतना सा है एक बड़े से यूनिवर्स में. नाउ आई एड माई ओन फ्लेवर टू दिस. आप सोचो रेवती, एक बहुत इतना बड़ा यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स में इतने सारे कॉन्टिनेंट्स है, वो कॉन्टिनेंट में इतने सारे देश है, वो देश में से इतने सारे स्टेट है, उसमें से एक सिटी है, उसमें से हम एक है, उसमें से अपना प्रॉब्लम है. तो लार्जर स्केल पे वी आर नॉट इवन दिस टाइनी, बट हम उसको ग्लोरीफाई करते हैं. अरे मुझे गैप आ गया, अरे मुझे ये करना पड़ा, इट वाज आवर डिसीजन, वी आर हैप्पी टू डू दैट, राइट. किसी ने फोर्स नहीं किया हमें कि गेट प्रेग्नेंट एंड लुक आफ्टर दिस थिंग. किया भी होगा, चलो आई अंडरस्टैंड कि किया भी होगा, फैमिली प्रेशर भी आते हैं, सोशल ऑब्लिगेशंस भी है, बट वी डिड दैट, राइट. सो नेवर एवर I would give you this, never ever turn back कि हाँ मैंने किया, हाँ अरे नहीं, जोरदार बोलो, हाँ मैंने किया. गैप है, जैसा जैसा टाइम आता गया, जैसे the demand, always talk in demand. It was the time demand where I needed to be like this, and that's why I did that. And I think that was the right approach, that was the right demand of that time, and मैंने उसको वो क्या बोलते हैं, अच्छे से निभाया, and we gone it. Now things are changing, तो मैं again change हो रही हूँ. That shows I'm adaptive. I'm not a change resistant person, right? So wherever life is taking me, I am trying to tap that opportunity with open heart, with open mind, and not carrying the baggage, oh things did not work in my favor, or things did not work the way I wanted to be there, like. So you have to have, और वो कैसे आएगा पता है रेवती, वो आंखों से आएगा. जितने कॉन्फिडेंट आप रहोगे, आंखों से और स्माइल से आएगा. जितने कॉन्फिडेंट आप रहोगे ना, उतना अपने आप अपने चेहरे पे आ जाता है. अपना फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे ऐसे इमीडिएट चेंज होता है. बॉडी लैंग्वेज पे काम कीजिए रेवती जी. जैसे अगर मैं ऐसे गई, आप जा रहे हो और मैंने ऐसे किया, तो आप मुड़ के देखेंगे नहीं देखेंगे कौन था,
Did I utter a word to you? No. Did I say something? No. अपने बच्चे खेलते रहते, we just go there and do this. नहीं मम्मा, I have not done anything. Body language बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है. तो वो अगर मन में डर है ना, तो वो अपने आप यहाँ पे आ जाता है कि शिट यार. तो वो स्लाउचिंग, फिर हम ऐसे वो we get into that empathy zone. यार नहीं, no, I did that. That's nothing wrong in it. ये जरूरी था. And that's why ये मेरा लाइफ चल रहा है. This is my journey. मुझे कहाँ जाना है in a bigger scale of picture, ठीक है, slowly gradually I'll be there. तो वो करेंगे. गैप कैसे आपको ये करने हैं? Can you hide something? Can you show something? That means I'm not saying that half truth बोलिए, but कवर कर सकते. अगर आप बोले मुझे यहाँ पे पिंपल है, तो सबकी नजर आपके पिंपल पे ही जाएगी. तो आप वो गैप को पिंपल करके ट्रीट करते रहेंगे तो सभी बोलेंगे हाँ गैप है यार, आई वोंट बी एबल टू एंटरटेन यू. ऐसे मत बोलो, गैप है बट आई वाज एबल टू डू दैट. अब थिंग्स चेंज हो गई है, मैं अगेन चेंज हो रही हूँ. आई एम चेंजिंग विद द टाइम. दिस इज माय स्ट्रेंथ. ये एटीट्यूड से सीवी में डालो, ये एटीट्यूड से एक्सप्लेन करो. यू राइटली मेंशन दैट आई कैन नॉट क्या बोलते हैं उसको, मुझे सबको मेरा पर्सनल स्टोरी नहीं बोलनी है, मत बताओ. सिर्फ बोलो ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, ड्यू टू सम फैमिली दिस थिंग, माय पर्सनल रीजंस, I had to do this, I had this responsibility, I had this priority of that time जो मुझे निभानी थी, and I happily did that. ऐसे करके करो. So that was a long answer to your short question. Yes, Aruna ji. Yeah, ma'am. See, now in this case, we are saying that you cover the gap, So when we are called for an interview, then we can speak on these points. So generally, when we upload our CV in any of the job portals, or we send, if we write a cover letter, the concerned consultant also should read it. How can we communicate via the CV that what is the reason for the gap? Aruna ji. So there are two things to do that, right? One is your key skills. हाँ, generally मैं मोटा मोटी आपको बताती हूँ, because we are not freshers, okay? तो आपका नाम, नंबर, LinkedIn profile, photo, and then हम क्या लिखते हैं? Career objective. Those career objective are many of the times copy pasted. Don't do that. Tailor made it. और वहां पे आएगा, वो रिप्लेस करिए जो करियर ऑब्जेक्टिव है ना, उसको रिप्लेस करिए. उसको ऐसे मतलब हाईली इंटरेस्टेड प्रोफेशनल वांटेड टू ग्रो विद द कंपनी, वो नहीं आते लंबे लंबे लाइन, वो लाइंस कट कर दीजिए. यू डोंट हैव टू रियली राइट दैट बिकॉज वी डोंट रीड इट. व्हाट अदरवाइज अगर रेवती जी ने लिखा की स्किल्स, और रेवती जी के की स्किल्स है ऑडिट, टैक्सेशन, दिस 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 दिस, 6 टेक्निकल 2 पर्सनल, वही अगर बुलेट पॉइंट में दिख गए तो मैं इंटरेस्टेड हो जाऊंगी ये सीवी में कि अच्छा ऑडिट है ना, हाँ रेवती ने ऑडिट भी किया, अच्छा टैक्स है ना, ये भी किया है. तो रिप्लेस दैट करियर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम टू द की स्किल्स दैट यू हैव. 5-6 योर टेक्निकल, 1 2 3 4 5 6 and 2 पर्सनल. Done. Then talk about the experience. अभी आपको अगर ये नहीं दिखाना है, गैप है, टाइम प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इमीडिएट गैप दिखाई देते, तो पूरा ना एक इंडस्ट्री टाइप आप बना दीजिए कि ये इंडस्ट्री ये काम किया, और नीचे कहीं तो छोटू सा दिखा देना कि क्या बोलते हैं हम, प्रोजेक्ट टाइमलाइंस या फिर क्लाइंट टाइमलाइंस या फिर अपने वर्क मतलब जिसके साथ अपन ने काम किया उसके टाइमलाइंस है ना, एंड में ना छोटा सा ऐसे ऐसे लिख देना. तो अपेरेंटली हम झूठ भी नहीं बोल रहे, सिर्फ हम ना उसको नीचे दिखा रहे और अपना वर्क जो है वो ऊपर दिखा रहे. मतलब अगर मैं आपका इफ इट इज शॉप और मैं आपको बताती हूँ, यू नो व्हाट, आई वांट वेडिंग ट्रूसो, will you start showing me cotton के कुर्ताज? No ना, you'll show me exclusive लहंगास, exclusive घाघरास that we have. बस वही exclusivity ऊपर करनी है और थोड़ा सा इसको नीचे लिखना है, एक ब्रैकेट में लिख दो this firm such and such firm from such and such date from such and such, ये ब्रैकेट क्लोज. फिर आएंगे आपके इंडस्ट्री में जो भी काम किया, सपोज मतलब पहले आपने प्रैक्टिस का लिख दिया, फिर आएंगे इंडस्ट्री और नीचे लिख देना फ्रॉम सच एंड सच डेट फ्रॉम सच एंड सच. लेट देम आस्क यू, लेट देम फर्स्ट कॉल यू इंटरव्यू के लिए, एंड वो सब करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, अचीवमेंट्स लिखेंगे वहां पे कि क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं हमने, राइट? वो अचीवमेंट्स लिखेंगे. नो अचीवमेंट्स शुड बी रिटन लाइक हैव पार्टिसिपेटेड इन मल्टीपल दिस थिंग. द मोमेंट यू राइट इट, हमें इमीडिएट समझ में आ जाता है कि ये अपने गणपति उत्सव वाले चमचा लिंबू है. स्पेसिफिक लिखिए,
स्पेसिफिक लिखिए कि यू नो व्हाट I've done this national competition, international competition. नहीं किया, it's all right. इसके लिए एक रिप्लेस कीजिए, वॉलंटियर करना शुरू कर दीजिए. आर्ट ऑफ लिविंग है, आपके ईशा फाउंडेशन, ये फाउंडेशन, वो फाउंडेशन. तो एक तो दो चीज, हम वी गिव इट बैक टू सोसाइटी, इट विल कम बैक टू अस, राइट. एंड सेकेंड थिंग, अपना जो ये है बीच का टाइम है, हमने वो सोसाइटी के लिए यूज किया है. वी आर अ सेंसिटिव पर्सन, ह्यूमन बीइंग. जो मैं काम नहीं कर रही थी, दैट डज नॉट, तो ये मैं डाल रही हूँ, दैट कैन शोकेस. तो कोई भी आपका जो कोई भी चैरिटी वाला रहेगा ना, वो डाल दो, फिलॉन्थ्रफी एक्टिविटीज के अंदर वो प्लेस कर दो उस गैप को, है ना, कि हम कर रहे थे. एंड मुझे पता है you are a pure heart, you are a genuine heart. Given an option, you would definitely would love to do that, right? But ये documentation purpose के लिए डालो, अच्छा रहता है, एक्सप्लेन होता है कि मैंने वॉलंटियरिंग किया, मैंने ये किए, मैंने ट्रेनिंग्स लिए, मैंने, और वो ट्रेनिंग डालो. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जो चमचा लींबू डाल रहे, उसके बजाय लिखो कि मैंने ये ट्रेनिंग्स लिए, ये मैंने सेमिनार्स लिए, ये मैंने अटेंड किए, ये मैंने असिस्ट किए. और करना शुरू करो रेवती, वी हैव टू डू दैट. जैसे आप अभी आए हो, वी हैव टू डू दैट, एंड दैट जस्टिफाइज अ कॉल फॉर यू टू कम ऑन बोर्ड. लाइक आ जाइए, एटलीस्ट इंटरव्यू तो लेते हैं, फिर बाद में रिजेक्ट करना, पास करना इज द अनदर गेम. बट दिस जस्टिफाइज एटलीस्ट अ कॉल to for you to get into practice or job or something like this sort. And रहा सवाल आपको फुल टाइम करना ही नहीं है, फुल टाइम नहीं करना तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, असाइनमेंट ही है, तो इट इज काइंड ऑफ कोलैबोरेशन, एंड दैट कोलैबोरेशन विल हैपन मोर ओवर द फोन रादर देन सच फोरम्स. कि हाँ कोई असाइनमेंट है तो दे दो यार, कोई प्रिंसिपल रहेगा दे दो यार. अभी जैसे हम ये फोरम में बैठ रहे 27 लोग हैं, हम उनको पता चल गया रेवती को चाहिए, हाँ रेवती कैन यू डू दैट, कैन यू चिप इन इनटू दिस प्रोजेक्ट. It will happen more of that way if you don't want to do that. I'm not sure, Aarti, where do we have to submit CV for campus placement? Probably Pinky ji or maybe Vandana ji. Do you want to answer this question? इनकी जवाब दो. अरे इनकी जवाब दो, क्योंकि फॉर्म हमने किसका जवाब दूं, किसका जवाब दूं, बोल. अरे उन्होंने जस्ट पूछा कि सीवी डालना है. अभी हमने वो डाला ना गूगल फॉर्म प्लेसमेंट का. प्लेसमेंट का जो फॉर्म है ना, मैंने आई आल्सो वेंट थ्रू दिस, दो आई डोंट रिक्वायर इट टू गो थ्रू. तो उसमें वो सॉफ्ट स्किल्स, ये स्किल, वो स्किल, उसमें कहीं बायोडेटा अपलोड करने की वो है क्या? नो. हाँ, फिर तो लोगों को कंफ्यूजन होता है ना कि हमें सीवी लेके आना है या अपलोड करना है, यू नो. सो वो एक डाल देने की, कभी भी गूगल फॉर्म में ज्ञान दे रहा हूँ, वो बाद में तू टेक केयर कर लेना. There should be clarity whenever you do the work. Anyway, bold in your code. मेरा दूसरा फोन आ रहा है. चल, sorry. No problem. So yeah, I believe Aruna ji, I answer your question. Yeah, good. Any other question that I can take up for? Madeline, you wanted to ask since so long. I know you've been waiting. No, actually, ma'am. Hello. First of all, sorry for the issue. I actually wanted to help Gitanjali when she spoke about her CPA. I'm actually currently pursuing my CPA. I started the process in August, and I think there was some. It just takes time for your you know the other formalities, your evaluation and stuff to get done. I got through. It's also because of the lockdown everywhere. So by October, I got through with my formalities, and I was simultaneously studying. So accounts and audit is pretty manageable. This is at least what I'm looking at. I gave my accounts exam in December, and I cleared it. At that, it was like one go thing. So it's not like a very tedious thing, which I wanted to help her out, because if she's going to US, that is what I actually, that would be a more valid degree than the CMA. Okay. So it doesn't take 15 months. It's actually how you take it, how you complete your lectures, how you complete it. It's pretty basic for us CAs. I mean, we've actually gone through like a lot of pressure in our CA, like for the Indian CAs. So that is like MCQs and task-based small things which really are manageable. So yeah, that's what I wanted to tell you. And like we can choose on the dates where we want to take up the exams. That's so it's our disposal. I mean, Gitanjali. Yes, everything is at your disposal. You can do it here. You can even go there. In fact, if you do it from US, it'll be cheaper fees also for you to give your exams.
So you'll save a lot if you maybe you can start your Dubai center is there if you don't want to go that far and give it to agar Dubai जा सकते हो 12-15 हजार में, then you can still give it your exams from there. I think even in India it's the same cost. It's just Canada and US. I am saying there is no centers for examination. Yeah, there's no centers. No, so that center is Dubai, and the closest center for us is Dubai, and another one is of course CPA. And is it true, Madeline, that it is state-wise CPA is different? Yeah, it's state-wise CPA is different, and I did not get into much of it. I just went to a counselor and the people who even give me the tuitions for it, and they said you to select the state Montana, probably because I think it's probably easier and lesser restrictions when you probably transfer from one state to another. I guess you might have to give like another exam if you're moving from one state to another. So that you'll have to just check up on which there are credits that we have to put in, right? Yeah, that's right. Yeah. I don't remember that. There's some terminology for that credits. 150 credit points. Yeah, you need 150 credit points. Yeah. And your program. There's some program which is it called when they assess your credit ratings there? I mean, yeah, it's the foreign evaluation, your credit assessment, your education assessment that you're supposed to be doing. That's the only thing that takes time. But apart from that, the education wise, I'm definitely sure you will manage that. It's not much, I know. Yeah, it's not. It's not much. Yeah, just want to confirm from which institute you have take the. Oh yeah, it's Simandar Education. I think they're based in Hyderabad, Telangana, and they give you, I think, Beco material in the US. Yeah. There's a squash. I never will be able to pronounce that name. SCHWERF. Squash. I know. I only remember Becker and Wiley's for that matter. I don't go to the other one. So the Becker one is pretty good. The one is also I know about it. I mean, they are trusted one, and they are not costly. 2 lakh mein ho jayega, I believe. Yeah, they are pretty good. And Simandar even offers you like an installment, like monthly EMIs without any interest. It's a monthly EMI system that you can pay for it. You get Simandar material, like where you have Indian tutors teaching you, as well as the Becker's portal. And Madeline, just to ask you one question, do they have any placement support? Yes, they do. From Simandar? Yes. The placement support is huge from Simandar. All big fours, including GT and some more companies. I guess they even tied up with Infosys and Amazon quite recently. So yeah, the placement is quite huge at Simandar. Forward to complete the circle that way. That I've studied, I've invested. What next? If the revenue is not getting in, then it'll be mismatch. Yeah. Okay. Thanks, Madeline. Yes. Any other question? Anything? I know I'm keeping Suchi on hold since so long. But any other question that you would like me to answer? Do you think if I can throw some light in, or some CV related, or never ever start your introduction that hi myself Sayali Chandaliya Kotari. Myself क्यों मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज हो आप? क्या है मतलब प्रॉब्लम क्या है? हाँ, her highness, his highness हो नहीं. My name is I am. Okay, so basically I am from Nasik. अरे basically क्यों मतलब ये fillers क्यों चाहिए हमें? I am from Nasik. Simple, crisp, smart. I have done whatever you have done. I've learned these 3 things. If you want to talk about your family, then probably you may talk about family and one point that you learn from your family, and then one of your passions, right? So this should be our introduction, quick introduction. उसके बाद गैप के बारे में हमने बात कर ली. CTC के बारे में मैं बात करना चाहूंगी. नेवर एवर कोट CTC, राइट? मतलब कॉस्ट टू कंपनी मत बोलिए, कैश इन हैंड के बारे में बात करिए. अगर इफ यू टेल मी दैट यू नो व्हाट आई नीड 10 लाख रुपीस, आई ओके फाइन, 10 लाख डन. सो मैं क्या करूंगी, उसमें ग्रेचुइटी भी डाल दूंगी, PF भी डाल दूंगी, सोडेक्सो भी डाल दूंगी और CTC बना के दे दूंगी. ले टिक. नो, always talk cash in hand. I want this number
take home salary, right? That's another thing. Fourth thing is to justify कि मैं Madam? GST में, yes. Yeah, but saying cash in hand, this much, like suppose 10 lakhs, 9 lakhs, is it good practice to tell him, yeah, is it, I want CTC 9 lakhs, 10 lakhs, or tell them as per industry standards? Nahi, Revati, these are quite mediocre answers. As per industry standard, it is negotiable. As per you think, मतलब we are giving अपना चीज उनके हाथ में, rather than speak, इतना मुझे cash in hand चाहिए, CTC तू तेरा बैठा. CTC is like your point of view. I need this much in hand because it happened to me. मैंने जब मांगा था, हाँ दे देंगे, जब आया ऑफर लेटर तब CTC बना दिया और CTC में ये ग्रेचुटी भी डाल दिया. ग्रेचुटी अभी मिलने वाली कि 5 साल बाद मिलने वाली, मतलब उसका कहाँ ऐड कर रहा है तू अभी, राइट? इसके ऊपर से मैं सीखी कि नहीं ये लोग बड़े स्मार्ट रहते हैं, इनको CTC नहीं कैश इन हैंड से बात करना है. These are quite mediocre answer when you say हाँ as per industry standard whatever you feel like. No, always get your numbers corrected. And then if you think कि ये बहुत monetary aspect हो जाएगा, no, but we are talking about business here. We're talking about profession here. We have every right to earn that money, right? Because we're going to spend time, energy, everything there. So you always have to talk that this is what I need in hand, number one. And if things fall in place, we can touch base or we can negotiate it to the extent. ऐसा दिखा दो, flexibility भी दिखा दो, but get your numbers ready. Ask your friends, ask your family, ask your parents, ask your जो भी रहेगा उस इंडस्ट्री में कि क्या ट्रेंड है, क्या जनरल बैंड है, फ्रेशर को कितना देते हैं. अच्छा, फ्रेशर को 7 से 10 लाख तक देते हैं, फिर AVP VP को 15 लाख से 20 लाख तक देते हैं, VP को 25 से आगे देते हैं और डायरेक्टर को 50 से आगे देते हैं लैक्स पर एनम. ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का ट्रेंड है जो मैं आपको बता रही हूँ, राइट? तो ऐसे हर चीज का बैंड पता होना चाहिए हमें कि कौन सा बैंड कैसा है, किधर जाता है, वैसा. बट ऑलवेज टॉक कैश इन हैंड, टेक होम सैलरी वैसा. CPA for US, which courses to be pursued if one want to UK? Oh, who's going to go there? Mayuri? हाँ, Mayuri ICAEW कर लो. ICAEW, Institute of Chartered Accountants in England and Wales. उनका ACA का प्रोग्राम है जो मैं हूँ इनके साथ. BFP करके कुछ उनका आपको और फ्री में मिलेगा, बिजनेस फाइनेंशियल प्रोफेशनल करके है. 1 एग्जाम, 10 क्वेश्चन, 5 साल के ऊपर अगर आपका ये है क्या बोलते उसको, एक्सपीरियंस है, बस यू विल बी एबल टू गिव दिस एग्जाम. बहुत आसान एग्जाम है. अच्छा, सिर्फ आपको इसके लिए 2 चीजें है. एक स्पॉन्सरर लगेगा, नॉट फाइनेंशियली हु विल स्पॉन्सर यू, बट स्पॉन्सरर इन अ वे दैट ओके आई नो मयूरी, शी इज गुड, व्हाटएवर शी हैज रिटन इन हर प्रोफाइल, ये मैं वाउच करता हूँ. तो दैट वन स्पॉन्सरर जिसका लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग इंस्टीट्यूट से आना चाहिए, अपने इंस्टीट्यूट से, कि वो गुड स्टैंडिंग है, मतलब मेंबरशिप भर रहा है, CPA आवर्स कर रहा है, सब कर रहा है, और आपका भी लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग आना चाहिए. ये आपको एक विंडो रहती है, वो विंडो में आप आपका सबमिशन कर सकते हो कि, और उसमें ना असेस होता है कि आप एडवाइस कैसे देते हो. आपने ये एक ऐसे टाइप का एग्जाम है, ऐसे समझ लो. मोर अबाउट दिस ICAEW pathways, search कर लेना, you'll get to know. If you have any trouble, I've given you the number, you can get in touch with me, Mayuri. तो वो कर लो. उसके पैरेलल अगर बहुत ही पढ़ाई का कीड़ा है तो ACCA कर लो, बट मत करो. ICAEW is more than sufficient. अभी हम CA बन चुके हैं ना, so it's more than sufficient. You go and do this ICAEW. फिर आयरलैंड के साथ भी अपनी ट्रीटी है, आयरलैंड. ये कर लो. ACCA का डिप्लोमा इन IFRS कर लो. तो ये 3 चीजें कर सकते हो आप. ओके मयूरी? And it is a beautiful place. Good luck with it. But अगर if you are vegetarian तो थोड़ा सा problem हो जाएगा. A lot of fish and chips are being served locally. ठीक है. Any other question? Time is clicking. We need to rush as well. Yeah, can I ask? Yes, please. Yeah.
Actually, I'm having question with respect to the first means changeover means in my journey. I have switched over the multiple companies. Means in the span of 6.5 years of my industry experience, I moved into 4 to 5 companies. Every year, that means more or less you shifted. Yeah, we can say in 2 companies I stay for 2 years, and in other 2 companies I stay for 1 year, and one company half year, just like that. Fair enough. Don't worry. Actually, this is happens mostly due to family reason because of shifting like that. हाँ, तो बोल सकते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी में गए. Yeah, but what बस वही happens बोल रहा है. every time they ask means they start to ask the question on the same line. I know. Why they are switch over? Why you are shifting the companies more and more often? Why अब only 2 years? गीतांजलि कैसे होता है ना, गलती सबको याद रहती है, अच्छा काम किसी को याद नहीं रहता. अभी आप में तो हमें फॉल्ट फाइंडर करना है ना, तो फॉल्ट क्या है, अरे गैप है, अरे इतना चेंजेस है, अरे इतने शिफ्ट है, वो रहेगा. जैसे मैंने उनको रेवती को भी बोला, एकदम डट के जाना है कि आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग. हॉप स्किप जंप इसके लिए नहीं मारा कि बेटर मॉनिटरी एस्पेक्ट चाहिए. जैसे जैसे रोल आते गए, जैसा जैसा लाइफ बढ़ता गया, मैं चेंज होती गई, मैं आगे बढ़ती गई. डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी. और झूठ मत बोलना, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में पकड़े जाओगे. Yes, I know. हाँ, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में पकड़े जाओगे, फिर तो ब्लॉक लिस्ट हो जाओगे एकदम ही. मेरा प्रॉब्लम होता है, मैं सच ज्यादा बोलती हूँ, उसके लिए प्रॉब्लम. All right, which is all right. It is always better. It is always better, Gitanjali. I'm telling you this from my experience. It is always better to be clear. Unnecessary बाद में ना आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और वो ऑर्गेनाइजेशन भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है. इससे बेटर भैया मैं नहीं कर सकती, मैं रात को नहीं काम कर सकती, मैं क्वार्टर एंड में नहीं रुक सकती, मैं ईयर एंड में नहीं रुक सकती, ऐसा काम है तो दो, नहीं तो मत दो. अब जब मैं नहीं रुकूंगी तब उनके एक्सपेक्टेशन सेट है कि इसने पहले ही बोला था. और मेरे भी एक्सपेक्टेशन सेट है कि ठीक है मैं एवीपी से वीपी नहीं बनूंगी ये साल, विच इज ऑल राइट, क्योंकि मुझे घर पे देखना है ऐसा. हाँ, इट इज ऑलवेज बेटर टू बी ओपन. Another point is that means if you start with any of for example with small organizations, your CTC or pay scale will be might be low on the lower side as compared to big four or with as compared to MNCs. So what the employer take the benefit of it. Whenever you switch on the job, they take you base of your earlier salary. On that, they give you 20 to 30% hike. But they are not matching the standards. Means if your colleagues are getting 15 lakhs, they are not giving you 15 lakhs. They are giving you 10 lakhs, 12 lakhs like that. है, ये ब्रूटल है, ये क्रूअल है, लेकिन आपने झगड़ना है कि ठीक है, my last drawn salary was 10 lakhs, suppose, but वो 2 साल पहले की थी. अब मेरे पास ये है, मेरे पास ये ट्रेनिंग है, मेरे पास आपके रोल्स एंड रिक्वायरमेंट्स की ये डिमांड है और मुझे ये ऑफर करने को मिल रहा है, तो सैलरी करेक्शन चाहिए. बोलना पड़ेगा, हार्ड नेगोशिएटर बनना पड़ेगा, करना पड़ेगा वो. और इसी वल्नरेबल पोजीशन का एचआर फायदा उठाती है ना. When they know that yeah we are so desperate to get that job, that's why they kind of चलिए कि इसको 2-3 लाख कम दे दे, आ ही जाएंगी, पता है. Don't show your desperation. I know from within you are desperate, अरे यार ले लो, but then don't show it. Play the roles, like that. Yeah. Shali, I think clock is ticking and we are closer to our ends towards our end. So let me quickly tell Suchi what investment banking is all about. And see, Suchi, there are product controller, legal entity controller, risk and responsibility, compliances. तो मैं पहले बताती हूँ. प्रोडक्ट कंट्रोलर मतलब क्या रहता है कि प्रोडक्ट्स रहते हैं, डेरिवेटिव्स, आपकी इक्विटी, सीडीएस, ये सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, राइट. तो फ्रंट ऑफिस रहता है, बैक ऑफिस रहता है और मिडिल ऑफिस रहता है. फ्रंट ऑफिस हम सोच भी नहीं सकते, ज़ॉम्बी लोग रहते हैं. Why somebody will give you millions of dollars to trade on their behalf? Simple हिसाब, because they are zombies. I mean, they technically super strong, like हार्वर्ड जैसे 10 यूनिवर्सिटी से उनका नॉलेज रहेगा, राइट. उनके पास उन्होंने ये काम किया रहेगा, पोर्टफोलियो मैनेज किया रहता है, तो
they are revenue generating office. So front office abhi ke liye bhul jao. I'm not demoralizing any one of us that you cannot be there in front office. Definitely I would love to see one of us or many of us to be there. Middle office you can still go because it is a bridge between front and back office is where we predominantly CAs are there, right? So back office is number crunching, analysis, putting up the decks, talking to boards, MIS, sab aata hai. So product controller is the thing where there are so many products and he needs to understand which of his products are giving him the highest benefit. So every day there is a balance sheet, every day there is a P&L, every day there is a commentary which is being done. I would definitely not recommend Suchi to get into product controllership role because it is quite demanding. Worst come scenario, if you're not well, you couldn't join the office. It is a daily task, right? So if you are absent for that day, you have to have networking that somebody else will take care of your work and that somebody else will have his or her daily task as well, right? So product controller for now बाहर निकाल दो. Legal entity controller, you understand SPVs, special purpose vehicle. Special purpose vehicles have been created for many other purposes, like for taxation purpose, broker dealer purpose, parent child node के लिए एक बहुत बड़ी बैंक की छोटी सी ब्रांच ऐसा समझ लो, और फिर वो छोटे छोटे ब्रांच हम इकट्ठा करते और कंसोलिडेटेड बनाते, isn't it? तो वो है आपके लीगल एंटिटी कंट्रोलरशिप. तो उस लीगल एंटिटी का आप सब करते हो, राइट फ्रॉम योर बैलेंस शीट टुवर्ड्स दिस टुवर्ड्स दैट, एवरीथिंग, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, टैक्सेशन, कंप्लायंसेस सब करेंगे. हाँ, सो दैट इज मोर और लेस इन अलाइनमेंट विथ आवर सीए वाला चीज. Okay, so that's that. Third thing that we can do is get into अलग ही करना है, मुझे ये टैक्स ऑडिट करना ही नहीं है. Get into risk, FRM जो मैंने कोर्स बोला था वो FRM कर लीजिए और ये कोर्स में जाइए. आप एक बात समझिए, banks cannot offload entire their funds into the market, isn't it? They cannot. They have to have some liquidity. ये liquidity कौन define करेगा? That liquidity is being defined by Basel management. Basel Accord. जैसे अपने पास SEBI है, RBI है, वैसे Basel management करके एक governing bodies है, right? So ये स्विट्जरलैंड में एक जगह है Basel, वो उसकी कमेटी है. 2008 में लेमन्स ब्रदर क्रैश होने के बाद बाजिल 2 से बाजिल 3 पे गया, तो उनका रिक्वायरमेंट है कि 10.5% ऑफ योर रिस्क वेटेड एसेट यू विल कीप इट असाइड as a liquidity. Okay, so that is something that you can do. There will be operation, credit and financial risk. नहीं, operation, market and financial risk. तो इनमें हम काम करेंगे. वैल्यू VAR मतलब मार्केट रिस्क का VAR करके करते हैं. So that is market risk. Then there is a regulators SEBI, RBI, वैसे FINMA है, Fed है, FSA है, ऐसे regulators है. हमें आता नहीं है, which is all right. We will be get trained on it. But we have to have some knowledge about it कि FSA मतलब क्या, FINMA मतलब यूरोपियन कंट्री का रिपोर्टिंग है, वो सिखा देंगे, अपने को आ जाएगा, don't worry about it. हाँ, so that is regulatory reporting. We got to be quite mindful when we are into regulatory reporting because it is external reporting. So whatever will happen directly, it is external. तो इनका goodwill is at stake. These international bankings, इनका goodwill at stake रहता है, right? तो वो वहां पे थोड़ा सा एक कॉशियस रहना पड़ेगा. देन देयर इज कंप्लायंसेस, राइट फ्रॉम योर सॉक्स कंप्लायंसेस, KYC, जो भी कंप्लायंसेस. अगर आपका लॉ में ज्यादा इंटरेस्ट है, आप CS हो, आपने उस जैसे प्रैक्टिस की है, देन कंप्लायंसेस, राइट? सो दैट्स कंप्लायंसेस फॉर यू. देन देयर इज वन वेरी different role which is continuous improvement. So all what we have thought about Six Sigma, Kaizen, Lean, ये जो भी टेक्निक सीखे हैं, इन शॉर्ट फॉल्ट फाइंडर रोल है ये, कि ये प्रोसेस ऐसे चल रहा है, इसमें कुछ तो उंगली करने का, अरे नहीं ये 1 + 1 = 2 है, बट 5 - 3 = 2 भी हो सकता है, एंड इट इज बेनिफिशियल टू द कंपनी. वी कैन सेव लॉट ऑफ रेवेन्यू, वी कैन सेव लॉट ऑफ दिस, लॉट ऑफ दैट. द ब्यूटी ऑफ इट इज लाइक यू वर्क विथ CFO CEO लेवल, क्योंकि प्रोसेस चेंज कर रहे हो, आप स्टेटस को चैलेंज करने वाले रहोगे. या सो दैट इज अनदर अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू कैन गेट इनटू, नताली, दैट कैन बी ऑफ योर इंटरेस्ट. या फ्रॉड डिटेक्शन जैसा ये भी आप कर सकते हो. फिर क्या बचा? कंप्लायंसेस हो गया, फिर FP&A रोल विच आई टोल्ड यू. तो ये सारे मोटा मोटी रोल्स रहते हैं. रीजन्स अलग अलग रहते हैं. वी गॉट टू अंडरस्टैंड कौन से रीजन के लिए. एशिया पैसिफिक थोड़ा सा सुबह 7 से 5 रहता है. ANZ मत लेना, ANZ रात को 3:30 बजे चालू होता है, क्योंकि 5.5 घंटे दे आर अहेड ऑफ अस. सो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला ये मत लेना.
EMEA ले सकते हो, इट इज जनरल शिफ्ट 11 to 8. अमेरिका थोड़ा सोच के लेना कि सच्ची में आपको 12 से 2 रात के विल यू बी एबल टू स्पेयर द टाइम. तो जनरली स्पीकिंग उनको बोलना मुझे जनरल शिफ्ट चाहिए या फिर मुझे एशिया शिफ्ट चाहिए. एशियन शिफ्ट इज 7 to 5. तो ये सब बिल्कुल फास्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का है. Now with no experience in any of these, how do I go ahead? Like how do Chartered I accountant, मैं वही बोल रही हूँ, चार्टेड अकाउंटेंट हैविंग नॉलेज ऑफ व्हाट दे डू. जॉब डिस्क्रिप्शन, इफ यू गेट एनी जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर दिस, कॉल मी, आई टेल यू कि ये पूछ सकते हैं, एंड वो आपको पता ही रहने वाला है. सिर्फ आपको क्या नहीं पता होगा मैं बताती हूँ, आपको ना ये नहीं पता होगा रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, विच इज स्टिल ओके. इंटरनेशनल टैक्सेशन की भी टीम बैठती है, इंडिया की भी टीम बैठती है, क्योंकि इंडिया में भी उनके सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेस है, राइट. तो वो टैक्सेशन की भी टीम बैठती है. सो लाइक दैट यू विल गेट टू नो, डोंट वरी, बाय स्पीकिंग. जैसे आपने क्वेश्चन किया और 10 लोगों को क्वेश्चन कीजिए, राइट. So yeah, that was my 2 cents. I believe there are no more further questions that we have. I mean, even if we have, it's not the end of the thing. This is the beginning. We will be in touch of each other. We will talk to each other. We will share our accomplishments, our problem areas. जो भी आपको अच्छा लगता है ना. So that's that. I know ये structured नहीं था कि अच्छा अभी 10-15 मिनट आपने सीवी पे बोलना है, फिर आपने इंटरव्यू पे बोलना है, फिर एक ग्रुप डिस्कशन लेना है. ये स्ट्रक्चर्ड नहीं था. दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दैट दिस प्रोग्राम. इफ यू वांट मोर स्ट्रक्चर्ड वे, more specific queries regarding CVs, group discussion, personal interviews, how do I do that? ये अभी कैसे हो गया? It is more of a career counseling, not really career counseling. It's a discussion that what we can do ahead with our life. The only thing I have, one of my friends, she mentioned, I was literally gossiping. Okay, I was literally gossiping. So she said, हाँ यार, मतलब मैं किसी के ऐसे सासू माँ टाइप्स के ऐसे गॉसिप चल रही थी हमारे. तो बोले कैसे रहते ना. तो उसने एक लाइन बहुत अच्छे से बोली कि यार कैसे रहता नहीं है वो, they just don't know how to utilize their potential अच्छे से. उनके लाइफ कितने अच्छे से वो कर सकते हैं, बस वो नहीं पता, इसके लिए वो गॉसिप कर रहे हैं या फिर इसके लिए द वे दे आर बिहेविंग, राइट. तो अपने में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, वो सिर्फ टैप करने का ये है. कपूर मैडम इज योर हाय. सो दैट्स देयर. लाइक टाइम मैनेजमेंट, वी आर, हमसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट कौन अच्छा कर सकता है. वी आर हैंडलिंग बेबीज, including our husband. We are that is eldest baby रहता है अपना, कि मतलब अभी तक 30-35-40 साल के हो गए, but still they don't get certain things. So that our elder baby, then our younger babies, our household, our parents, our family, there's so much of pressure. We are dealing with it so nicely. तो हम ये क्यों नहीं कर सकते. और यही स्टेटमेंट मैंने बोला था जब मुझे पूछा गया था कि टीम मैनेज करने का कोई ये है क्या. मतलब टीम क्या, मैं अक्की फैमिली मैनेज करती हूँ, तो टीम तो मुझे बहुत छोटी लगती है सामने. So you got to play the roles rather than they asking you a question, you have to ask them a questions. ऐसा मतलब कभी कभी रोल्स शिफ्ट करने पड़ते हैं हमें इसके लिए पावरफुल अंदर से फील करना पड़ेगा. एंड दैट रिक्वायर्स पावर ड्रेसिंग. जैसे मैं आज ड्रेस पहन के आई हूँ, स्कार्फ पहन के आई हूँ, पहनो, कभी कभी पहनो, इट्स ऑल राइट. कोई बात नहीं, टमी दिख रहा है देखने दो, बट आप कॉन्फिडेंट हो. नाइस नेचुरल मेकअप, taking good care of ourselves, pranayam, meditation. There are so many things. Just ये नहीं है कि यार काम ही मिलाना है या पैसे ही कमाने. Don't just die rich. Die with experience and take the experience. Revati, Gitanjali, you are taking so many experiences in your life and you are so rich in that. So पैसे के मामले में ऊपर नीचे, बट बाकी ये तो एक्सपीरियंस कोई नहीं ले रहा ना जितने आपने लिए, राइट. सो डोंट जस्ट डाई रिच, डाई एक्सपीरियंसली रिच, ऐसा है ना.
ऐसा मुझे कहना है. एंड दैट्स हाउ आई एम कीपिंग माय सैनिटी कि मैं एक डायरेक्टर लेवल से निकल के आज 1-1.5 साल हो गया, मैं आई एम डूइंग समथिंग बट नॉट इन द कॉर्पोरेट. तो मुझे भी आई मिस माय वर्क प्लेस, बट मेरे मन में वो सैनिटी है कि ठीक है यार, पैसे मिलते थे और ज्यादा मिलते थे, बट मुझे आज शांति है. आई एम गिविंग टाइम टू माय किड्स, आई एम गिविंग टाइम टू माय थिंग्स व्हिच आई रियली वांटेड टू डू. सीए के टाइम पे तो कभी कुछ किया नहीं, सिर्फ पढ़ाई की हमने, उसके बाद जॉब कर लिए, उसके बाद तो शादी हो गई, उसके बाद तो बच्चे हो गए, खत्म. हम कहाँ है, तो हम यहाँ है. Right, so do give yourself some good tap on your back. Okay, yeah, you're doing well, don't worry. एक दिन हस्बैंड को बता दो, बिठा दो, 8 दिन बोलना सब करना है, एवरीथिंग ठीक है, आप ये नहीं कर सकते हो किचन का काम, उसका हेल्प दे दूंगी, बाकी सब करना है. 9वें दिन आपको फोन है, यार कम बैक यार, आई कैन नॉट हैंडल इट मोर. दिस इज आवर पावर. दिस इज आवर पावर. यूटिलाइज इट टू द पोटेंशियल. और डरो मत, गैप सबके जीवन में होती है, सब प्रॉब्लम हो सकते हैं, डोंट वरी एट ऑल. एंड वी आर देयर, वी टुगेदर, वी आर देयर फॉर ईच अदर, राइट? So on that note, thank you very much. I had a great time to talk to all of you, to meet you, Pinky ji, for the very first time, to Charmi, and you know, there are so many good things happen to me. Even I'm learning. वो course over, yeah, crossover का मुझे पता नहीं था. So they are learning from my side also. So thank you so much for having me on this conversation, and any one of us can create this WhatsApp link and we can get together. या फिर चार्मी आपके पास रहेगा तो get us together in one WhatsApp group or whatever you feel like. or I'll give you हाँ email address. मेरा जैसा email address मत बनाना. I'm telling you this. ये एकदम ही अनप्रोफेशनल ईमेल एड्रेस है. sayali@gmail.com. तब 11th स्टैंडर्ड में मुझे सीए बनना था, तो क्या बचपन की यादें 55 तक मैं मेंटेन कर रही हूँ? डोंट डू दैट. गुड ईमेल एड्रेस वुड हैव बीन sayali.chandalia. हाइफन लोगों को समझ में नहीं आता, अंडरस्कोर लोगों को समझ में नहीं आता. कीप इट सिंपल. एक तो इकट्ठा रखो या फिर बीच में डॉट डालो अगर आपका नेम इज नॉट अवेलेबल, बट प्रोफेशनल साउंड करना वहीं से शुरू करो. इससे इससे भी बेहतर था मेरा सेज एंजलाइज. आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मतलब कौन सा क्रिएटिविटी में थी, मैं सेज एंजलाइज वाला क्या था. तो उससे ये बेटर लगता है मुझे. सो इट स्टार्ट्स विद दैट. Writing good email, writing good this thing, क्या बोलते हैं उसको, summary of yourself, writing, crafting CV. I would say the word is crafting your CV. We'll have that session also कि how to craft CV. Personalized इसमें ले सकते. Rather, I'm going to run such programs very soon कि कैसे how to do with this crafting. मेरे बहुत सारे अच्छे connects हैं MD level पे, CFO level पे, director level पे. They're going to talk to all of us. तो वो भी मैं आपको शेयर कर सकती हूँ कि वो प्रोग्राम भी आप अटेंड कर सकते हो. just like that, if you feel कि कर सकते हो, so we can definitely do that. So Kapoor madam, thank you for calling me, and Charmi, thanks. Pinky ji, thank you. And yeah, I think it's over to all of you. So first of all, thank you, ma'am, for sparing your beautiful time with all our beautiful participants today. Today, at the end of the session, all of one who had faced problems in interviews or group discussions, they will be very confident in answering each and every questions. Now they would be asked in their interviews, and also the aspects of life or the practice or whatever a CA can do. You had showcased it so well that now all of us are quite confident to be in any kind of any work kind you give confidence to, and with the group discussions and personal interview, how we can face without any fear. So thank you so much, ma'am, to guide us through and giving your important input in this talk. Thank you so much. Thank you. Group discussion, we never did it. We will do it. I would love to take 1 or 2 dry run like group discussion. Chalo abhi group discussion karte. Not like this lovely chat with all of us what we had, but proper business. Like we mean business here, we mean profession here. So I would love to be part of this PI, having mock interview done. Kaise mock interview dena hai, CV kaise craft karna hai. I would love to give more insights that I've seen the standard practices across the globe. I would definitely give it to all of us. So stay tuned. Yes. How to answer, how to
handle the question if I don't know the answer of that question? So कुसुम जी, generally अगर हमें नहीं पता रहता है, how do we react? हाँ, sorry. ये हाँ and sorry सबसे पहले साइड में निकालो. उसके बाद जो आता है वो आता है smartness. Then उसके can I buy a minute to think over it? With my limited knowledge, this is the answer. Do you think it is right? Sorry, can I please guess? Let me try about this. And ये होने के बाद उनको पूछो, was it right? Is it complete? कुछ मिसिंग तो नहीं है? That showcase मुझे लिमिटेड नॉलेज है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ आंसर करने का, और उससे बिगर अप्रोच इज कि मैं सीखना चाहती हूँ, कि ये मुझे मालूम नहीं है लेकिन ये मैं सीखना चाहती हूँ. इसके दो फायदे, इंटरव्यूअर आपको ऐसे सवाल नहीं पूछेगा, उसको पता चलेगा ओ माय गॉड ये तो बूमरैंग हो गया, ये मुझे ही पूछ रही है. तो कुछ नेस्टी इंटरव्यूअर रहते जबरदस्ती वाले ये करते, तो दे विल नॉट डू इट वन मोर टाइम. एंड देन सेकंड इज यू विल गेट अ गुड फीडबैक फॉर दिस. Thank you, ma'am. Yes. Yep. चलिए श्रवणी मैडम बोलिए आप, मैं आपके लिए रुकी हूँ. You're on mute, Kapoor madam. You're still on mute. Actually, I called Sarvani madam because there are many questions of participant how to go for campus and what document we need for that. So I called Sarvani madam. Madam is the right person to give an answer of all this query, because she is the female behind all full show. So we want to give a good round of applause for Sarvani madam for her dedication and her effort. Because of that, we are from 1st March till 7th March, we are here with all together. So it's to talk to several females, and that as CFO CEO से लेना timing for 2 to 5 means आप morning and evening ले सकते हो, but office time weekday में लेना it's only possible by is here. All the participants, if you want any question for campus, you can ask for Sarvani madam. Very good afternoon to all of you. And it's a pleasure that after just a minute, I have to leave because my train is there. So nice to meet you, Sayali, first time, but I am impressed very much with you, and we will meet you soon. Okay. All the best, all the participants. Thank you. When are you coming back, Pinky? 9th ko madam, I am coming back, but for 10th and 11th again I have to go to Karjat now. That I'm holding the fort, don't worry. No, I will take the thing on 10th and 11th, but till 9th I can't take. Hello. Yeah. अच्छा मैडम मैं मीट में हूँ आज का प्रोग्राम में. हाँ उसके बाद में बात करती हूँ आपसे. Friends, it was a thought process which was given to me by Pinky madam and Sweta madam. Is there something different we should do for Women's Day this time? So that thought process I put it into a schedule for about 10 days, 15 days, where we are a mixture of members from diverse people. Some of the members are housewives now, some of the members are practicing, some are in the industry. So it is a mixture of all, so which everybody enjoys and understand, what is there you can do further. Just you cannot say, Baba, I've got a family to look after and that is a full stop for me. No, you can. A lady, I think, is a person who is versatile. I think we are much more above other human beings. So as Sherry told, as we can be the best team leader. Similar manner, we can be the best person
to lead and set examples. So you have got disconnected with the profession. We are here to help hold hand with you to come back into profession and see a new sunrise. Well, to coming to the placement part, in fact, all those who have applied, I have passed on the data to the company, but we were expecting a good number of companies to be, but because they people, when we told it is on the virtual platform, companies withdraw. There's one company who was ready, which I have said. There are others also lined up, but we'll send in the data to them. It will be a virtual platform. See, it was a physical platform, it was a different. But now I think Revti, you're from Kolhapur, right? One of you from Kolhapur, I think. Yeah, ma'am, I'm from Kolhapur. Sorry. Yeah. Because I was going through the data, I saw people from outside Bombay also. So we'll be sharing the data, and there are a lot of companies who are approaching us, and we'll be sharing. So they will do one-to-one interview with you all. Mostly at this level, the group discussion does not come in until it is physical. So it is and you all have crossed that age for the group discussion. They will be testing your potential. That's the reason we have put what updating yourself, talking about the recent updates, and all those sessions. So that was a wrap up to your face. So it has been shared, so you will get a call from the company itself. Okay. At the same time, I will sharing, I'll mailing all of you, who is the company, who is the concerned person who will calling you up for the interview. And so we are having a couple of more companies to, right? So we'll be sharing all this data so that you also know who can, if anybody calls you up, you don't expect a blank call, right? So you know, so it's calling up. We have shared the data. At the same time, there are other events too, which I feel that you all should also participate in that, update yourself with the new skill, new job. And we are here always to reach out. And as and when the data is there with me, so any vacancy come across, I'll be posting. And I'm in a WhatsApp group. I think all have not joined, if I'm not mistaken. So I will request each of you to join. Shelly, मैं आपको भी add कर दूँ वो group पे. हाँ, चलेगा. Yes. So anything that comes across to us, we can pass on in that group. And please do not put some advertisement and all, but put something which will be value added and knowledge sharing. That will be purely for thought. It was nice talking with you all. And I think, Shelly, we can take a quick GD, but non-academic. Non-academic. I don't think so, Kapoor madam. We can do it right now because there's 10 minutes left. No, you just give them the tips, like tips and technique. Right. And what are the topics, how to start a GD. Okay, so quickly taking I mean, I know it's over, but still we are talking, so it is PS. So what we can do is like do's and don'ts. Quickly I can share with you. Those who are opening the group discussion are going to get additional advantage, like 5 marks, 10 marks extra. The summary जो करते हैं उनको भी extra mark मिलते हैं. When the communicator or they are saying that okay, you may summarize it, that means summary मतलब summary. उसके बाद आपके पास कितने भी valid points रहे, you are not supposed to utter a word after that. Summary means whatever you have spoken. Yes और no वाले topics है, summary में बहुत smartly ये मत कर देना summary करते वक्त हाँ इसके वजह से yes वाले points जीतते हैं. No, summary means yes or no. ये दोनों हमें discuss हुए. Thank you very much for this ये मतलब points, right? किसी को अगर काटना है, बहुत बोले जा रहा है, is not able to listen, I mean कुछ नहीं कर रहा है,
तो देन थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज पे काम कीजिए, थोड़ा सा एक स्टर्न लुक दे के बोले कि यू नो व्हाट माय डियर फ्रेंड, यस थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग सच वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन द प्लेट, बट और इमीडिएटली आपका एक पॉइंट डाल दीजिए कि बट दिस इज व्हाट इट इज, राइट? या फिर बट दिस इज व्हाट समथिंग somebody else would like to get in. She's not spoken for last 2 minutes. I think she needs to tell it. Group discussion is like how you will be best fitted into the teams, है ना? इसके लिए ग्रुप डिस्कशन देखते हैं कि आप टीम में कितना अच्छा काम कर सकते हो. So that is group discussions for all of us, right? So that's group discussion. Starting करते वक्त hello, my name is Sayali Chandaliya, कोठारी डडड, ऐसे मत करना. Crisp and smart. Every coin has two sides, and that's how. अगर yes और no वाले टॉपिक रहेगा, that's how these are. और जैसे ही आप स्टार्ट करते हो, आपके 3-4 पॉइंट्स आपने बोल देने हैं, क्योंकि उसके बाद सब लोग झपट पड़ेंगे टू स्पीक, और उस चक्कर में कभी शायद आपको पॉइंट्स देने की यही नहीं मिलेगी, चांस ही नहीं मिलेगा. तो मॉडरेटर को ध्यान में रहेगा कि अच्छा इसके पास 5 ये थे, उसको बोलने थे बट शी कुडंट से इट, राइट? आपके जो 5-4 पॉइंट्स है वो ग्रुप डिस्कशन को नेविगेट करेंगे. कोई बहुत ही भलते से जा रहा है, किधर भी कुछ भी बोल रहा है, ब्रिंग हिम बैक. I think we are deviating from the topic. We should stick to our this thing. ऐसे करके उसको bring it back. Okay? आवाज ज्यादा हो रहा है तो don't raise your voice. Raise the quality of your comment. Getting my point? So ये थोड़े मोड़े ग्रुप डिस्कशन के हैं, मतलब बहुत ही क्विक डूज एंड डोंट्स जो अपने को इंटरनेट पे भी अवेलेबल है. बट देन एक कॉमन मिस्टेक्स ये हो जाती है कि कोई आवाज चढ़ाता है तो हम डेस्परेट हो जाते हैं. अगर मैं मैडलिन के पास देख रही हूँ और मैडलिन नॉट कर रही है, तो इट इज लाइक कि मैं नेक्स्ट टाइम मैडलिन के पास ही देख के बात करूंगी. बट नहीं, सबके पास देख के बात करना है. जब फेस टू फेस रहोगे सबके पास, और एक ग्लांस थोड़ा सा मॉडरेटर के पास भी कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रही हूँ, लाइक दैट. हाँ, फिर वो अपने कॉमन मिस्टेक्स, पेन रहते हैं, खट 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 करते रहते हैं, या फिर पेन लगा के ऐसे पिन पॉइंट करते हैं, यू मैडलिन यू आर रॉन्ग, यू चार्मी यू आर रॉन्ग. ऐसा ऐसा नहीं कर सकते. पेन साइड में रखिए. ये दीज आर बेसिक बॉडी लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स होते हैं. हाँ, फिर ना वो अपन घोड़े दौड़ाते रहते हैं, पैर शेक करते रहते. डोंट डू दैट, दैट शोज यू आर एंशियस. अपने अंगूठियों के साथ मत खेलिए. डैंगलर्स तो पहनने ही नहीं है, बड़े चंकी बिग ज्वेलरी आर स्ट्रिक्ट नो नो, करने ही नहीं है. और फटाफट अगर ग्रुप डिस्कशन, 5 टाइप के ग्रुप डिस्कशन हो सकते हैं. यस और नो वाले एब्स्ट्रैक्ट, पिंक इज न्यू ब्लैक, ये एब्स्ट्रैक्ट है. हाँ, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड हो सकता है, पॉलिटिक्स के रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पे एक तरफा, जैसे डावरी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. 90% ऑफ द क्राउड विल से कि नहीं लेना चाहिए, बट 10% क्राउड है कि लेना चाहिए बोलेंगे. बट क्यों लेना चाहिए? इट इज ओके टू बी like that, मतलब to be different from what others are thinking. Okay, it's okay, definitely okay, don't worry about it. क्या ये सही है कि मैंने ना पहले yes 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 के बारे में बात किया, फिर सडनली मुझे याद ध्यान में आया कि अरे मेरे पास तो नो के पॉइंट्स ज्यादा है yes से. Can I shift? Yes you can, but only once. वो तड़ैत मड़ैत मत करना कि अभी yes बोल रहा हूँ, अभी no बोल रहा, फिर से yes में आ गया, ऐसा नहीं. तो ये कैसे अपन ने प्रोजेक्ट करना है? फॉर एग्जांपल आप yes 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 के बारे में बात करें, कोई no 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 के बारे में बात करना है, इमीडिएट वहां उसको बोलना है थैंक यू माय डियर फ्रेंड फॉर पुटिंग दिस पॉइंट इन ऑन टू द टेबल दैट चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव. एंड फिर आपके 2-4 जो नो के पॉइंट्स है वो बोल के चुप बैठिए. अब एकदम चुप बैठिए, फिर कुछ मत बोलिए, फिर बाद में बोलना, राइट? सो दिस इज द वे दैट यू हैव टू डील सच डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर यू हैव टू चेंज इट. एंड दैट्स व्हाई इट इज प्रीरेक्विजिट दैट यू शुड गो विथ अ पेन एंड पेपर. जैसे 2 मिनट का टाइम देते, फटफट फटफट पॉइंट्स निकाल लेना. ओके, जितने मैक्सिमम पॉइंट्स आप एक साथ डाल सकते हो उतने डाल देना, क्योंकि पॉसिबल है आपके पॉइंट्स कोई और ले लिया, फिर आपके पास पॉइंट्स ही नहीं रहेंगे, फिर और अब मैं क्या बोलूं. ये हो सकता है, ये होता है. हाउ मच यू टॉक इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ यू टॉक इज मोर इम्पोर्टेंट. What value you add is more important. I'm not asking you to speak 100 lines which doesn't add any value to that group discussion. Even if you speak one sentence with the conviction, with valid point, it's enough for me to judge, right? So that's very very short and crisp of group discussion. If you have any query, yeah, so that's that. तो भी करे लॉग आउट कपूर मैडम. Any queries?
Excuse me, ma'am. Yes. We have filled only Google Forms for campus placement. Yeah, that is the Yeah, bad. but but actually we have not shared any CV. So I don't think so that Google Forms will give us the flavor of our resume. Resume के लिए मैं आपको because that is the data we have taken the format which you are able. Now we'll see company will ask for the CV. Whenever they, because this data will go to the company, and when they take interview, before that they will call you and tell you to take the CV. But that will coordinate. You don't worry, Gitanjali. That will be coordinated. As they have the requirement, we'll be with you. But tomorrow, be there by 2 o'clock, and when we log in, so that we can connect you to the companies. So it will happen tomorrow. Yeah, definitely. Okay. Yeah. Thank you. Yeah, all the best, everyone. Take Yeah, care. thank you. Yeah. Thanks. Bye. So I'll give a formal vote of thanks to Sayali ma'am, who also took the group discussion, being a short time but it was too quick, and totally we are now ready for the group discussion. All the best to all the participants who being recruited, or I'll wish luck to you to get recruited in the next week. Thank you also Shravani Kapoor ma'am to organize, and Pinky Kedia madam and Shweta ma'am to organize such a beautiful week of women who will make us empowered and empowered. Thank you all and all the best. Bye. Bye. Tune. Tada. Thank you, ma'am. Thanks.